Rishabh, we are live now. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ameen. Assalamu alaikum. I'm Muhammad Ali Saif Chima, Chairman CPD Committee Lahore of NRC. And on behalf of committee, I welcome you all in today's session. And today's session is about other laws. And these laws primarily consist of employee benefit laws. And it includes Workers' Welfare Fund, Workers' Profit Participation Fund, Provident Fund, Gratuity Fund, Social Security, NEOBI, and few others. So we'll be discussing its compliance requirements, its accounting, its taxation, its recent changes, and most importantly, the auditor's responsibilities as per ISA 250, consideration of laws and regulations in the audit of financial statements. So the format of today's session is slightly different from our previous sessions. We'll be having 4 presentations of 20 minutes each, and then we have a dedicated question answer session of 20 minutes. So the audience can post the questions during the presentation, and we'll have summary of that questions, and then we'll respond in that question answer session. So we have very learned and experienced professionals with us to cover this area. We'll be having with us Mohammad Saftar Saab. He is partner, Tagaman Company Chartered Accountants. Ahmed Salman Arshad Saab, he's partner, Amir Salman Rizwan Chartered Accountants. Amir Rashid Saab, he's partner, Amir Rashid and Company Chartered Accountants. Mohammad Nasir Munir Saab, he's partner, Pro Hussain Chaudhary and Company. The chairman for today's session would be Mr. Imran Afzal. He is past president and partner, Grant Thornton Anjum Rahman. And on behalf of committee, I extend a very warm welcome to all the presenters in this session. And I'm sure that today's session would be very beneficial for our views, inshallah. So to formally start the session, I request our chairman, North Region Committee, Rafkat Hussain Saab, for his opening remarks. Rafkat Saab. Thank you, Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Session Chair, past President ICAP, Mr. Imran Afzal, distinguished keynote speakers, my colleagues at NRC, worthy members, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and very good afternoon. On behalf of Northern Regional Committee, it is my privilege and pleasure to welcome all of you in this very important webinar. Ladies and gentlemen, the effect of laws and regulations on financial statements varies considerably. The provisions of some laws or regulations have a direct effect on the financial statements. Non-compliance with laws and regulations may also result in fines, litigation, or other consequences for the entity that may have material effect on the financial statements. If we talk about today's webinar, through 18th Constitutional Amendment in April 2010, certain laws were devolved to the provinces, and thereafter the Sindh government promulgated its own labor laws, bringing about substantial amendments in their scope and structure, followed by some other provinces' government. Apart from other laws, the Sindh government promulgated the 3 most prominent laws, and these are Sindh Workers' Welfare Fund Act 2014, Sindh Companies Profit Participation Act 2015, and Sindh Employees Old Age Benefit Act 2015. Matters relating to ambit and interpretation of the Companies Profit Act and Employees Old Age Benefit Act were taken up by employers before the superior courts, and certain litigations are still going on. An important law being recently implemented in Punjab is Punjab Workers' Welfare Fund Act 2019. Ladies and gentlemen, every regulatory law brings new challenges, requirements, and expectations for the businesses and professionals. Our members, either in practice or industry, compliance and review of compliance with other laws require special consideration.
Compliance with these laws brings significant challenges, especially for small and medium-sized businesses. To discuss some important laws from regulatory, accounting, auditing, and taxation perspective, and to answer your questions, we have invited very eminent professionals. With this, I would like to thank our distinguished keynote speakers and our session chairman for taking time out of their very busy schedule and joining the webinar. Inshallah, we are going to have a great session ahead. Thank you very much. Thank you very much, Rafkat Saab, for the kind words. So it's a time for a first presentation, and it's about Workers' Welfare Fund and Workers' Profit Participation Fund. So I invite Mohammed Safdar, partner, Tagum and Company Chartered Accountants, for the presentation. Safdar Saab. जी सफदर साहब, आपको आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही तक। Safdar Saab, time for your presentation, sir. I believe कि कोई शायद इनके कोई IT कोई इनके साथ शायद connection में कोई issue है, so we can wait for 1 minute. Otherwise, we can move towards the next presentation of Ahmed Salman Arshad Saab. So we'll wait for 1 minute. Okay, we can start with the second presentation, and that is about Provident Fund and the Gratuity Fund. So Ahmed Salman Arshad Saab, you may please continue with your presentation. I am audible? Am I audible? Yes, you are audible. Exactly. Thank you very much. Thank you, Ali, for handing over the session to me. I will appreciate NRC for arranging this session on other laws. This is a unique topic which has been previously less emphasized. I am going to present on gratuity and the Provident Fund. We can also call it the post-employment benefits or employment benefits. या आसान अल्फाज में ऐसे कह लें कि बुढ़ापे में या बूढ़े वक्त के अंदर मिलने वाले पैसे। तो पैसों के बारे में की हुई हर बात अच्छी होती है, तो होपफुली ये भी बातें आपको बहुत अच्छी लगेंगी। और मैं सबसे पहले जो है ना, आई विल टेक यू थ्रू द होल प्रेजेंटेशन के उसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। पर्पज़ ये है कि आपको इसके थ्रू कर दूं, क्योंकि जब मैं किसी की प्रेजेंटेशन सुनता हूं तो सबसे पहले जब मैं कंटेंट्स देखता हूं तो उसके बाद मुझे अंदाज़ा होता है कि मुझे कितनी देर तक इस बंदे को बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो होपफुली मेरी प्रेजेंटेशन टाइम लिमिट्स के अंदर रहेगी और आपको ज़्यादा देर मुझे बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले जी हम टाइप्स ऑफ द बेनिफिट्स को डिस्कस करेंगे, देन द गवर्निंग लॉज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि कौन से लॉज हैं जो कि इस बात को प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी को गवर्न कर रहे हैं और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। Then the most boring part, the important definitions. Definitions is always boring part, लेकिन हम certainly try करेंगे कि इसको थोड़ा सा आसान रखें और थोड़ा सा easy रखें और इसको ज़्यादा बोर ना कर लें। फिर gratuity की provisions, then the provident fund provisions, relevant tax related provisions and applicable accounting standards on these laws. Firstly, जी सबसे पहले types of the benefits. We will go through the types of the benefits. There are two types of the benefits जिसकी हम discussion करें. First is the gratuity. Gratuity is a post-employment benefit and a defined benefit plan. इसको defined benefit plan इसलिए कहा जाता है कि employer के एंगल से उसने एक आपकी termination of employment के ऊपर या आपकी सर्विस completion के ऊपर एक defined plan आपको पेमेंट करनी है।
तो उसकी वजह से इसको डिफाइंड बेनिफिट प्लान कहा जाता है। इसकी मेनली 3 टाइप्स हैं: अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड, अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड एंड अप्रूव्ड ग्रेच्युटी स्कीम। Second one is the provident fund. Provident fund is a different from the gratuity. It is called defined contribution plan. क्योंकि इसके अंदर एम्प्लॉयर जो है वो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पे कर रहा होता है अपनी तरफ से, तो इस वजह से इसको डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान कहा जाता है। ये भी पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है। इसकी भी 3 टाइप्स हैं: recognized provident fund, unrecognized provident fund and statutory provident fund. Now moving towards the governing laws, the most important part of our presentation is the governing laws. Which law governs them? अच्छा, हर सूबे के अंदर डिफरेंट लॉज हैं। बेसिकली लॉ एक ही था, सब सूबों ने जब उसको अडॉप्ट किया तो उसके अंदर अपनी चेंजेस कर ली। द मेन लॉ जो इसको डील करता है वो इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑर्डिनेंस 1968 है। हर सूबे ने जब उसको अडॉप्ट किया तो अपनी अपनी चेंजेस कर ली उसके अंदर। इस्लामाबाद और बलोचिस्तान का सेम है। द खैबर पख्तूनख्वा हैज़ अ डिफरेंट वन, लेकिन सिंध ने अपना डिफरेंट लॉ बनाया 2015 में, द सिंध टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर। पंजाब के लिए वही है, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1968, जिसको हम डील कर रहे हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे अभी। इसको पंजाब ने 2012 में अडॉप्ट कर लिया था। इसके अंदर एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस लॉ इन द पंजाब, ये किसके ऊपर लगता है? द सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोग हमसे पूछते हैं कि जी मेरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ग्रेच्युटी और प्रोविडेंट फंड लगेगा या नहीं लगेगा, और क्यों लगेगा और कब लगेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो इस लॉ के अंदर दिया गया है वो ये है कि इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट ऐसी जिसने 50 बंदों वर्कमैन को एम्प्लॉय किया। वर्कमैन का वर्ड यूज कर रहे हैं, इसी को ही यूज करते रहेंगे एंड तक। इसकी हम डेफिनेशन भी देखेंगे। इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट विच एम्प्लॉयज 50 वर्कमैन, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग एटलीस्ट 20 वर्कमैन, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये हर वर्कमैन डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल या लेबर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जो हायरिंग हम करते हैं, या लेबर कॉन्ट्रैक्टर से बंदे ले लेते हैं इनडायरेक्टली, वो भी इसके अंदर काउंटिंग के अंदर हम शामिल करेंगे। ठीक। और ये ग्रेच्युटी या प्रोविडेंट फंड उसको मिलेगा जिसको 12 महीने गुजर चुके हैं ऑर्गेनाइजेशन। इट इज नॉट द फाइनेंशियल ईयर, 12 महीने होने चाहिए उसको, फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट नहीं हुआ होना चाहिए, 12 महीने पूरे हुए होने चाहिए। इसके अंदर एक छोटी सी एक्सक्लूजन है, वो ये है कि फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो कंपनीज हैं जिनके अपने स्टैट्यूटरी रूल्स ऑफ सर्विसेज मौजूद हैं, उनके ऊपर ये नहीं लगेगा। लेकिन अगर उनके रूल्स ऑफ सर्विसेज मौजूद नहीं हैं तो फिर यही स्टैंडर्ड उनके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। मूविंग अहेड, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, द बोरिंग पार्ट ऑफ द आवर प्रेजेंटेशन। ज़्यादा डेफिनेशंस नहीं डिस्कस करेंगे, सिर्फ 5 डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, वर्कमैन, एम्प्लॉयर एंड वेजेस। ये 5 चीजें बस हम डिस्कस करेंगे, इससे हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फर्स्टली, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर सबसे पहले जो चीजें, थोड़ा सा रीड आउट करना पड़ेगा इसके अंदर। रीडिंग सर्टेनली लोगों को बोरिंग लगती है, लेकिन थोड़ा सा रीडिंग करने पड़ेगा इस प्रेजेंटेशन के अंदर, थोड़ी सी। इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में सबसे पहले जिस चीज की हम बात कर रहे हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। छोटा पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, 20-22 सीटों से ऊपर वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं। ट्रैमवेज और मोटर ओमनी बस सर्विस की बात करें। देन ये जो डॉक्स एंड जेटीज की बात करें, जो सी पर शिप्स यहाँ पे लगती हैं और वो सारा मामला चलते हैं। इनलैंड स्टीम वेसल की बात करेंगे। माइंस, क्वेरी, ऑयल फील्ड, ये सारी चीजें इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट का पार्ट है। ऑल मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग प्लांट्स, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग प्लांट्स हैं वो सारे इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में आएंगे। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स इंक्लूडिंग सब कॉन्ट्रैक्टर्स, हेड्समैन और एजेंट, ये भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट का पार्ट है। एनी टाइप ऑफ द फैक्ट्री विच इज इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, कोई भी ऐसी फैक्ट्री जिसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किया जाता है वो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है। रेलवे, जो रेलवे का अपना एक्ट है 1890, उसके अंदर जिस किस्म की भी सर्विसेज हैं, जो भी इंप्लॉयज हैं रेलवे के, वो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में फॉल करेंगे। और इसके बाद है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। देन वी आर गोइंग टुवर्ड्स द कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट जिसके अंदर 20 लोग मौजूद हों तो उसके ऊपर प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी फंड लगेगा। तो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट क्या होती है? एनी टाइप ऑफ बिजनेस ऑफ एडवर्टाइजिंग, कमीशन, फॉरवर्डिंग। देन द क्लरिकल डिपार्टमेंट्स। क्लरिकल डिपार्टमेंट्स जो है कमर्शियल एडवर्टाइज जो है एस्टेब्लिशमेंट में आते हैं, इवन वो फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल अंडरटेकिंग। अगर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट एक चीज नहीं बन रही और उसके क्लरिकल डिपार्टमेंट के अंदर 20 लोग मौजूद हैं तो वो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में फॉल कर जाएगा। Then labor contractors who employs the workmen on behalf of the industrial or commercial establishment. Joint stock companies हैं, insurance है, banking companies है, stock exchange है, club, hotel, restaurant, cinema, theaters and any other establishment notified by the government. मैं इसको run through कर रहा हूँ क्योंकि ये basic simple सी चीजें जो कि यहाँ पे लिखी गई है, definition है। Then workman, the most important definition, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा cases courts में चलते हैं कि जी either I am a workman or not.
ठीक है, हम इसको उस केसेस के एंगल से नहीं देखेंगे, केस लॉ के एंगल से नहीं देखेंगे, हम इसकी सीधी वर्किंग के वर्डिंग के एंगल से चलेंगे कि कौन सा बंदा वर्कमैन है जिसको ग्रेच्युटी और प्रोविडेंट फंड की पेमेंट होनी चाहिए। एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट टू डू एनी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्क, वो ऑल टाइप ऑफ स्किल्ड और अनस्किल्ड इसके अंदर कवर हो गए हैं। जो छोटी सी एक चीज इसके अंदर कवर नहीं की वो सेमी स्किल्ड है, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट अपने जो नोटिफिकेशंस निकालती है मिनिमम वेजेस, उसके अंदर वो स्किल्ड अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड को भी कवर करती है। यहाँ पर उसने उसको कवर नहीं किया, लेकिन इसके अंदर सारे वर्कमैन को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, इसी चीज के ऊपर वर्कमैन की डेफिनेशन के ऊपर अक्सर लिटिगेशंस चलती हैं और सबसे ज्यादा केसेस इसी के ऊपर चल रहे होते हैं कि कौन आता है। लेकिन अगर हम इसको ब्रॉड एंगल में देखें तो तमाम स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स जो भी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं वो वर्कमैन है। Then the employer, who is an employer, who is responsible to pay the gratuity and the provident fund, owner of any industrial and commercial establishment है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है, फैक्ट्री का मैनेजर है जिसको ऑनर ने मैनेजर बनाया है, देन ऑनर ने किसी को सुपरविजन दी हुई है, खुद नहीं करता, किसी कोई सुपरविजन कर रहा है उसके बिहाफ के ऊपर, तो वो भी रिस्पॉन्सिबल है। तो वो भी ऑनर ही की डेफिनेशन में काम करे क्योंकि वो उसके बिहाफ के ऊपर काम कर रहा है। देन द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ वेजेस, जो पैसे हमें मिलते हैं, हर किस्म के जो पैसे हमें मिलते हैं उसको वेज कहा जाता है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि कौन सी ऐसी वेज है, कौन सी अमाउंट ऐसी होगी जिसके ऊपर हमें ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन करनी है या प्रोविडेंट फंड की कैलकुलेशन करनी है। इसके अंदर तमाम ग्रॉस वेज की बात है, इसके अंदर तमाम अलाउंसेस शामिल हैं, कुछ जो एक्सक्लूजन हैं वो यहाँ पे लिख दी गई हैं। पहली एक्सक्लूजन है वैल्यू ऑफ एनी हाउस अकोमोडेशन, इट इज नॉट मेंट टू बी हाउस रेंट अलाउंस, ये हाउस रेंट अलाउंस नहीं है, ये वैल्यू ऑफ एनी हाउस अकोमोडेशन है कि आपको कोई हाउस दिया गया है उसकी वैल्यू है, इसको नहीं इंक्लूड करेंगे लेकिन हाउस रेंट अलाउंस को इंक्लूड करेंगे। वैल्यू ऑफ सप्लाईज ऑफ एमिनिटीज है, आपको जो बिल दिए जाते हैं या मेडिकल अटेंडेंट दिया गया है, इसमें मेडिकल अलाउंस शामिल नहीं है, मेडिकल अलाउंस इज अ पार्ट ऑफ ए ग्रॉस वेज, ठीक है, उसको शामिल करेंगे ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन के लिए, लेकिन इसको जो एमिनिटीज की वैल्यू है या अटेंडेंट दिया गया है उसकी जो कॉस्ट थी उसको नहीं शामिल करेंगे, ट्रैवलिंग अलाउंसेस को नहीं शामिल करेंगे, या स्पेशल अलाउंसेस जो किसी जॉब के लिए आपको स्पेशली दिए जाते हैं उसको नहीं शामिल करेंगे, और उसके अलावा कंटिजेंट पेमेंट्स है जैसे कि लीव एनकैशमेंट है। सो इससे ये बात क्लियर हुई कि हमने जो वेजेस लेनी है जो कैलकुलेशन के लिए वो ग्रॉस सैलरी है इंक्लूडिंग ऑफ ऑल अलाउंसेस एक्सेप्ट दीज 4 टाइप ऑफ अलाउंसेस। सो अब हमारा ये बोरिंग पार्ट थोड़ा सा कंप्लीट हो गया है, जो होपफुली आप ज़्यादा बोर नहीं हुए होंगे इसके अंदर डेफिनेशंस के अंदर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाट आर द ग्रेच्युटी एंड व्हाट इज देयर प्रोविजंस। सबसे पहले स्टैंडिंग ऑर्डर के तहत कंडीशंस ऑफ ग्रेच्युटी क्या हैं, किसके ऊपर ग्रेच्युटी लगेगी, कब पे की जाएगी और किसको नहीं पे की जाएगी। फर्स्ट इज ये तमाम इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट पे लगेगी, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट हैविंग एट लीस्ट 50 वर्क्समैन और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हैविंग 20 वर्क्समैन। अगर किसी के पास 20 और 50 वर्क्समैन मौजूद हैं इंडस्ट्री और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में रिस्पेक्टिवली, तो उसके ऊपर ग्रेच्युटी लगेगी। लेकिन ये कब दी जाएगी, ये पेबल होती है जी ऑन रिटायरमेंट, ऑन रेजिग्नेशन, ऑन टर्मिनेशन और डेथ। ठीक है, ये इन 4 सिचुएशन में पे होगी। लेकिन अगर मिसकंडक्ट के केस के अंदर किसी को फायर किया गया है तो उस केस के अंदर ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। लेकिन मिसकंडक्ट की एक वाइड डेफिनेशन है, ये भी लेबर कोर्ट्स में बहुत से केसेस हैं और इसके बहुत से केस लॉज मौजूद हैं कौन सी चीज़ मिसकंडक्ट में आएगी और कौन सी नहीं आएगी। लेकिन अपेरेंटली मिसकंडक्ट के ऊपर अगर किसी को टर्मिनेट किया जाता है तो उसके ऊपर ग्रेच्युटी उसको पे नहीं की जाएगी। जो डेथ का सिनारियो है, डेथ के सिनारियो में जो उसके लीगल एयर्स होंगे उनको ग्रेच्युटी पे की जाएगी थ्रू द कमिश्नर ऑफ कंपनसेशन एक्ट। अच्छा, ग्रेच्युटी मिलेगी कब, ग्रेच्युटी मिलेगी कंप्लीशन ऑफ 12 मंथ्स के बाद। आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में 12 महीने कंप्लीट कर लिए हैं तो उसके बाद आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि आपको ग्रेच्युटी पे की जाए। ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन इक्वल टू 30 डेज ऑफ ग्रॉस वेजेस है। जो वेजेस हम पीछे डिफाइन करके आ चुके हैं उसकी 30 डेज की जो पेमेंट है उसके मुताबिक आपको ग्रेच्युटी पे की जाएगी। लेकिन अगर जिस तरह हम लोग होते हैं जिसको फिक्स सैलरी पे की जाती है, उनके सिनारियो के अंदर लास्ट ड्रॉन सैलरी जो है उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस के साथ। मतलब अगर मैंने 10 साल काम किया है तो लास्ट ड्रॉन सैलरी अगर 1 लाख रुपए है तो 10 साल के साथ उसको मल्टीप्लाई करके 1 मिलियन की ग्रेच्युटी पे की जाएगी। लेकिन अगर कोई वर्कर्स ऐसे हैं जैसे कि टेक्सटाइल सेक्टर है जहाँ के पर जो आपको सैलरी मिलती है वो पर पीस मिलती है कि आपने इतने पीस स्टिच किए उस पर मिलेगी, या इतने नंबर ऑफ बटन्स आपने हैंग किए तो उसकी बेस पे आपको सैलरी मिलेगी। तो उस सिनारियो के अंदर आप लास्ट ड्रॉन सैलरी नहीं लेंगे, लास्ट 12 मंथ्स के अंदर जो हाईएस्ट नंबर सैलरी उसने ड्रॉ की होगी उसको नंबर ऑफ ईयर्स के साथ मल्टीप्लाई करके उसको सैलरी पे की जाएगी।
थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर, अगर आपने 10 साल और 6 महीने काम किया है ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको ग्रेजुएटी 11 ईयर्स की मिलेगी। इन एनी केस अगर आपने एक साल में 6 महीने का वक्त कर दिया, पहला साल छोड़ के 6 महीने काम कर लिया है, और आपने पीछे, आपको जो ग्रेजुएटी है उसकी पूरे साल की मिलेगी। 10 साल 7 महीने काम किया तो 11 साल की ग्रेजुएटी मिलेगी, लेकिन अगर 10 साल 5 महीने काम किया तो फिर आपको 10 साल की ग्रेजुएटी मिलेगी। इन एडिशन टू डैट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कंपनी के अंदर आइदर ग्रेजुएटी होगी या प्रोविडेंट फंड होगा या पेंशन होगी। तो अगर इन सिनारियो के कंपनी के अंदर प्रोविडेंट फंड है और उसके अंदर प्रोविडेंट फंड के अंदर कंट्रीब्यूशन जो है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों करते हैं, लेकिन अगर एम्प्लॉयर उसके अंदर कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय से कम कर रहा है, नॉर्मली हम देखते हैं कि इक्वल कंट्रीब्यूशन किया जाता है, लेकिन अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय से कम है तो उस सिनारियो के अंदर वो रिक्वायर्ड, जो इस लॉ के तहत रिक्वायर्ड प्रोविडेंट फंड है उसकी डेफिनेशन को वो मीट नहीं करेगा, और वो लीगली जो रिक्वायर्ड प्रोविडेंट फंड है उसमें नहीं फॉल करेगा, तो कंपनी को ग्रेजुएटी फंड भी लेना पड़ेगा। वो एक बेनिफिट जरूर एम्प्लॉयज को मिलेगा, लेकिन वो लीगली उसको क्लासिफाई नहीं कर सकेंगे जो आपको प्रोविडेंट फंड चाहिए था। अच्छा, ग्रेजुएटी के अंदर ना लोग नॉर्मली जो क्वेश्चंस हमसे पूछ रहे होते हैं कि क्या ग्रेजुएटी का सेपरेट फंड बन सकता है? जी बिल्कुल, ग्रेजुएटी का सेपरेट फंड बन सकता है। क्या ग्रेजुएटी की जो है वो कैलकुलेशन जो है एक्चुअली से किस वक्त कराई जाती है? तो उसके लिए ये बेसिकली अकाउंटिंग मैटर है, लेकिन आईएफआरएस में रिक्वायर्ड है कि एक्चुअली से वैल्यूएशन कराई जाए। आईएफआरएस और एसएमई जो आए हैं अब अडॉप्ट किए आईकैप ने, उसके अंदर रिक्वायर्ड है कि एक्चुअली से वैल्यूएशन करवाई जाए, लेकिन एसएससी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है कि एक्चुअली से वैल्यूएशन करवाई जाए। नेक्स्टली हम डिस्कस करेंगे जी प्रोविडेंट फंड की प्रोविजंस। जो टाइम शॉर्ट है, थोड़ा सा रन फास्ट कर रहा हूँ। कंडीशंस ऑफ प्रोविडेंट फंड क्या है? इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट जिसके पास 20 और 50 बंदे होंगे, उसके अंदर ये आपकी प्रोविडेंट फंड की प्रोविजंस आएंगी, लगेगा। कब मिलेगा? पेबल ऑफ रिटायरमेंट मिलेगा, रेजिग्नेशन मिलेगा, टर्मिनेशन मिलेगा, डेथ पे मिलेगा। वही चारों सिनारियोज हैं जो ग्रेजुएटी फंड में थे, उसी की बेस के ऊपर ये मिलेगा। लेकिन इन केस ऑफ मिसकंडक्ट, जो ग्रेजुएटी में पैसे नहीं मिलते थे यहाँ पे जरूर मिलेंगे। वो इस वजह से जरूर मिलेंगे, मिसकंडक्ट की बेस पे भी आपको फायर किया गया, टर्मिनेट किया गया, तो आपको ये प्रोविडेंट फंड मिलेगा, क्योंकि ये आपका पैसा था, आपने खुद कंट्रीब्यूट किया हुआ था, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया था, और जो उसके ऊपर प्रॉफिट अर्न हुआ है उसमें आपका पैसा भी शामिल है। सो आपको पूरी अमाउंट इन केस ऑफ प्रोविडेंट फंड मिलेगी। और इसके लिए लीगल रिक्वायरमेंट ये है कि इक्वल कंट्रीब्यूशन एट लीस्ट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की हो। एम्प्लॉयर ज्यादा देना चाहता है वो एक सेपरेट इशू है, लेकिन इक्वल कंट्रीब्यूशन होना जरूरी है प्रोविडेंट फंड के केस के अंदर। वो बात जो मैंने पहले की थी कि अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अपनी कम करेगा एम्प्लॉय से, तो वो फिर लीगली रिक्वायर्ड प्रोविडेंट फंड को नहीं बनेगा, और उसके केस के अंदर कंपनी को ग्रेजुएटी की प्रोविजन भी लानी पड़ेगी। अच्छा, एक बड़े अजीब सा लॉ है जो कि सिंध में आया और केपीके में है, कि जी इन केस अगर आपके ने प्रोविडेंट फंड रखा हुआ है तो प्रोविडेंट फंड की पेमेंट किसी भी सूरत में ग्रेजुएटी फंड अगर आपके पास होता तो उससे कम नहीं हो सकती। थैंक्स गॉड के ये पंजाब में नहीं है। पंजाब में आप प्रोविडेंट फंड की पेमेंट किसी भी अमाउंट पे कर सकते हैं। सिंध और केपीके में ये भी है कि जी आपकी इन एनी केस प्रोविडेंट फंड की पेमेंट ग्रेजुएटी अगर होती तो उससे कम ना हो। अगर ऐसा होता तो फिर ये प्रोविडेंट फंड डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान नहीं रह गया, फिर तो ये डिफाइंड बेनिफिट प्लान बन गया कि इतना तो मिलना ही मिलना है, इससे ज्यादा मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। अच्छा, प्रोविडेंट फंड को जो कंपनीज ऑर्डिनेंस एक्ट 2017 का सेक्शन डील करता है वो सेक्शन 218 है। सेक्शन 218 जो है डील करता है कि वो कहता है कि जी आपके पास जो पैसे प्रोविडेंट फंड के आए हैं उनको 15 दिन के अंदर नेशनल सेविंग में लगा दें या सेपरेट स्पेशल बैंक अकाउंट में डाल दें। सेपरेट स्पेशल बैंक अकाउंट डजंट मीन अ सेविंग अकाउंट, इट कैन बी अ करंट अकाउंट। लेकिन अगर आप प्रोविडेंट फंड की रूह की तरफ जाएं तो ये पैसा फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय के लिए है, तो सर्टनली इसको इन्वेस्ट किया जाना चाहिए, ना कि करंट अकाउंट में रख दिया जाए। आप इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ऐसी स्कीम्स में जो एससीसीपी ने अप्रूव की हुई है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इन केस के अगर आपका प्रोविडेंट फंड का सेपरेट फंड बना हुआ है तो आपने इमीडिएटली ये पैसे उस ट्रस्ट में ट्रांसफर कर देने, और वो ट्रस्ट फिर अपने जो रूल्स एससीसीपी ने दिए थे 2018 के अंदर इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड सिक्योरिटीज की रेगुलेशन है, उसके मुताबिक इन्वेस्ट करेगा। उस रेगुलेशन के अंदर बहुत डिटेल्ड बताया गया है, लिमिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होंगी, कंडीशंस ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होंगी, कहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आईपीओ में कितनी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, लिस्टेड कंपनीज में कितना कर सकेंगे, बॉन्ड्स में कितना कर सकेंगे। ये रेगुलेशन आप खोल के देखेंगे तो आपको बड़ा डिटेल्ड उसके अंदर दिया गया कहाँ पर कितनी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक एडिशनल रिक्वायरमेंट उस जो रेगुलेशन में दी गई है कि आपने एनेक्जर ए जो है उस फंड का जो है ना एससीसीपी को फाइल किया करना है, जिसके अंदर वो तमाम डिटेल आएगी आपने कितनी अमाउंट कहाँ कहाँ इन्वेस्ट की हुई है।
वो तमाम की तमाम डिटेल आपने SCCP को फाइल किया करनी है। देन मूविंग फास्टली टूवर्ड्स द रेलिवेंट टैक्स प्रोविजंस के टैक्स की प्रोविजंस क्या है। जब आपको पैसे मिलेंगे तो पैसों के साथ गवर्नमेंट टैक्स तो लेगी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको पैसे मिल रहे हैं और गवर्नमेंट टैक्स ना ले, तो टैक्स तो देना पड़ेगा। वैसे भी हमारी टैक्स टू GDP रेशो बहुत कम है। अच्छा, अगर ग्रेचुटी आपकी अप्रूव्ड है तो उस डेट सिनारियो में तो आपकी एग्जम्पशन है, लेकिन आपकी अगर ग्रेचुटी अप्रूव्ड नहीं है तो एम्प्लॉयर साइड के ऊपर आपको उसकी डिडक्शंस नहीं मिलने वाली, आपका एक्सपेंस एडमिसिबल नहीं होगा। और एम्प्लॉय साइड पे क्या होगा जी, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आपकी फुली एग्जम्प्ट है ग्रेचुटी। अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड से पैसे मिले हैं आपको, जो कि आपने कमिश्नर से अप्रूव करवाया हो, टैक्सेशन कमिश्नर से, तो आपकी फुली एग्जम्प्ट होगी ग्रेचुटी। अप्रूव्ड ग्रेचुटी स्कीम है, आपने फंड नहीं बनाया हुआ लेकिन स्कीम बनाई थी और उसको अप्रूव करा लिया, उस सिनारियो में सिर्फ 3 लाख तक की अमाउंट जो आपको मिलेगी वो एग्जाम्प्ट है, बाकी नॉर्मल सैलरी टैक्सेशन में फॉल कर जाएगी। अगर आपके पास अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी है, अनअप्रूव्ड के केस के अंदर भी हमने थोड़ी सी रियायत आपको मिली है, जो कि 75,000 रुपया जो है उसके ऊपर टैक्स नहीं लेंगे मैक्सिमम, बाकी सारी अमाउंट के ऊपर टैक्स ले लेंगे। तो 75,000 रुपया आपको जो ग्रेचुटी मिलेगी उसके ऊपर टैक्स नहीं होगा, बाकी नॉर्मल सैलरी टैक्सिंग में जाएगा। 4 ऐसे सिनारियोज हैं जिसके अंदर ग्रेचुटी आपको मिलेगी तो इन एनी केस वो फुली टैक्सेबल होगी। ग्रेचुटी आपने पाकिस्तान में रिसीव नहीं की, ग्रेचुटी रिसीव की नॉन रेजिडेंट में। ग्रेचुटी एक ऐसे डायरेक्टर को दी गई जो कि रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी नहीं था। ग्रेचुटी ऐसे पर्सन ने रिसीव की जिसने ऑलरेडी एक और ग्रेचुटी रिसीव की हुई थी। तो अगर आपको 2 ग्रेचुटीज मिली हैं तो आपकी सिर्फ एक ग्रेचुटी एग्जाम्प्ट होगी, दूसरी ग्रेचुटी नॉर्मल टैक्सिंग होगी। थर्डली जी, आपके पास प्रोविडेंट फंड की टैक्सेशन साइड क्या होगी। प्रोविडेंट फंड के केस के अंदर अनरिकग्नाइज सिनारियो के अंदर जो कंट्रीब्यूशन आप एम्प्लॉयर साइड पे देंगे उसकी डिडक्शंस नहीं मिलेंगी। एम्प्लॉय साइड के ऊपर क्या होगा, एम्प्लॉयर जब आपको कंट्रीब्यूशन रिकग्नाइज फंड में देगा या अनरिकग्नाइज में देगा, वो दो डिफरेंट चीज़ें। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जब आपको रिकग्नाइज फंड में मिले तो 1.5 लाख तक का कंट्रीब्यूशन या 10% ऑफ द बेसिक सैलरी का कंट्रीब्यूशन जो लोअर होगा वो एग्जाम्प्ट होगा। लेकिन अगर अनरिकग्नाइज ही फंड होता तो जितना मर्जी आप कंट्रीब्यूशन दें उसके ऊपर कोई भी आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलने वाली, वो तमाम टैक्स होगा। इंटरेस्ट जो है वो 16% ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस तक का एग्जाम्प्ट होगा। अच्छा, होता ये है कि जिस वक्त फंड्स होते हैं प्रोविडेंट फंड के, तो वो आपको ईयरली अपने एम्प्लॉय को एक शीट देते हैं कि जी ये आपका एक्यूमुलेटेड बैलेंस खड़ा है, हर साल का, पिछले साल का ये बैलेंस था, इस साल का ये बैलेंस है, इसके अंदर एक्यूमुलेटेड में इंटरेस्ट का फैक्टर इतना ऐड हुआ, कंट्रीब्यूशंस का फैक्टर इतना ऐड हुआ। वो एक सफ़ा मिलता है हर एम्प्लॉय को जो उनका प्रोविडेंट फंड प्रॉपर बना होता है। वो जो अमाउंट्स हैं वो हर साल अपनी रिटर्न में ऐड कर ली जाती है, उसको रिटर्न के अंदर डिस्क्लोज कर दिया जाता है। तो जो रिकग्नाइज फंड होता है उसकी जो अमाउंट्स हैं वो हर साल डिस्क्लोज कर दी जाती हैं, लेकिन जो अनरिकग्नाइज फंड होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता। उसमें जिस वक्त आपको पैसे मिलते हैं उसी साल के अंदर वो सारा का सारा टैक्स किया जाता है, उससे पहले उसको कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा होता। सो रिकग्नाइज के केस के अंदर जिस वक्त आपको एंड के ऊपर पैसे मिलते हैं सारे के सारे वो सारे एग्जाम्प्ट हो जाते हैं, लेकिन अनरिकग्नाइज के केस के अंदर जिस वक्त आपको पैसे मिलते हैं सारे के सारे, तो सारे के सारे वहां पे इकट्ठे टैक्स हो जाते हैं। Then moving towards the last thing, applicable accounting standards. What are the applicable accounting standards? The applicable accounting standards जो कि इसको डील कर रहे हैं IS 19 है, इन केस ऑफ IFRS लग रहे हैं आपके पूरे के पूरे IFRS आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे लगेंगे। तो एम्प्लॉय बेनिफिट्स का IS 19 है जो कि 2011 में आया था, जिसके अंदर कंप्लीट डिस्कशन की गई है डिफाइंड बेनिफिट्स की भी और डिफाइंड कंट्रीब्यूशंस की भी, उसके अंदर तमाम डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट दे दी गई हैं। देन IFRS फॉर SME जो आपकी मीडियम साइज एंटिटीज़ हैं उसके अंदर सेक्शन 28 है। IFRS फॉर SMEs को जो ICAP ने अडॉप्ट किया था उसको वो डील करता है इन दोनों स्टैंडर्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स के साथ। और AFRS फॉर SSE जो स्मॉल साइज के लिए ICAP की तरफ से है, सेक्शन 15 है एम्प्लॉय बेनिफिट्स का जो इसको डील कर रहा है। इसके अलावा AFRS फॉर MSE एंड SSE हैं, वो अब यूज़ नहीं हो रहे लेकिन अभी तक वो इंटैक्ट हैं, उनको विड्रॉ नहीं किया गया, तो वो भी इसका उसका भी रेलिवेंट सेक्शन आपको यहाँ पे बता दिया गया। इसके अलावा जी ये मेरी यहाँ पे प्रेजेंटेशन खत्म होती है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो लोगों की तरफ से रेगुलर पूछे जाते हैं, क्या क्या एक टाइम के अंदर प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुटी दोनों हो सकते हैं या हम शिफ्ट कर सकते हैं। सर्टनली कंपनी शिफ्ट कर सकती है, अगर पहले ग्रेचुटी फंड दे रही थी और बाद में प्रोविडेंट फंड पे आना चाहती है तो उस साल उसके बोर्ड डिसीजन लेगा, ग्रेचुटी फंड को फ्रीज करेगा और उसी साल से प्रोविडेंट फंड स्टार्ट कर देगा, मतलब लैप्स नहीं होगा। अगर एक साल में प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुटी एक को फ्रीज किया और साथ ही दूसरे को शुरू कर दिया तो वो किया जा सकता है। दूसरे नंबर पे जो उसकी ये पूछा जाता है कि जी प्रोविडेंट फंड की रजिस्ट्रेशन या ग्रेचुटी फंड की रजिस्ट्रेशन कहाँ होती है, तो वो ट्रस्ट एक्ट के साथ रजिस्ट्रेशन होती है, उसका फंड के अपने ट्रस्टीज अपॉइंट किए जाते हैं और उनका रेगुलर इलेक्शन होता है और उनको आगे कंटिन्यू किया जाता है। थैंक यू वेरी मच जी। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द क्वेश्चन आंसर सेशन।
जो भी आपका क्वेश्चन होगा, I will answer it. Thank you very much for your time. Thank you. Thank you very much, Ahmed Salman Saab, for giving insight into both the funds. And now the time for the second presentation. In fact, first presentation. मेरा ख्याल है सफ्तर साहब का जो IT इशू है, I believe वो resolve हो गया है. तो वो शायर ने कहा कि हैं लफ्ज़ें लब तक आम निहायल हैं कि लफ्ज़ें लब तक जाम आने में. तो इसका मतलब ये है कि आप अपना इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा बेहतर कर लें. So, Sabda Saab, over to you for your presentation on Workers' Welfare Fund and Workers' Profit Participation Fund. Sir. Thank you very much. Sorry for the interruption because of this internet issue. So, can you share my presentation? Or I will share my screen with. Ali, who will share my presentation? Are you listening? आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है सत्तर साहब. मैं कह रहा हूँ मेरी जो presentation उसने share करनी है. Presentation आप share करेंगे. Okay, let me just go through it. और मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपके साथ. Yes, I think it's clear. Bismillahirrahmanirrahim. Is my screen now clear? Exactly, screen आप नजर आ रही है. Okay, so we'll start with the Workers' Profit Participation Fund. So this was originally governed by the federal government, but after the 18th Amendment, it has been shifted to the respective provinces because the labor-related rules, regulations, benefits, and administration has been shifted to the provinces because of this 18th Amendment. So the Punjab government passed the law in June 2018, and we have a Companies Profit Workers Participation Amendment Ordinance 2018, and we normally call it as WPPF. So first of all, we discuss the definition. There are two important definitions in this law. One is the worker, another one is the industrial undertaking. So the worker under the WPPF law is any person employed by an establishment, whether directly or through a contractor, and is employed for not less than 6 months. So if it is working there for more than 6 months in an organization, then WPPF is applicable and the worker is entitled to get the WPPF. So now the industrial undertaking. Industrial undertaking is any organization which use the energy, whether electrical, mechanical, thermal, or nuclear, which is transmitted mechanically, but not by the human or animal agency. Or it may include any organization for manufacturing, assembly, finishing, or other artificial process, a shipbuilding, a transformation, generation, conversion of electricity, working of mines and all well. And these are all the industrial undertaking which are required to establish a fund and pay WPPF to its workers. If we see the criteria for applicability of the WPPF, there are 3 conditions. So if you met any one of them, the law become applicable. The first one is that you have more than 50 employees in any time of the year, or you have a paid up capital up to 5 million on the last day of the accounting year. In the federal regime, it was only 2 million rupees. And the fixed asset value, if it costs 20 million rupees on the last day of the accounting year, then the law become applicable. Earlier, it was only 4 million rupees. So the provincial government has extended the exemption to some of the companies, but the limit of 50 is there. So if we see the contribution for this WPPF, it is 5% of the profit, and it is payable within 9 months of the close of accounting year.
it is payable by the organization, but if employee wants, he can pay a voluntary contribution, but this contribution by the employee cannot be more than 10% of his annual income, and he will be given a credit of 1.25% of his contribution. It means he will give an incentive if he voluntarily contribute into WPPF. So what if the company has established a fund and now company has distributed the WPPF to the workers, which is required to be distributed within 9 months of the close of accounting year. If any amount is left, that amount will not remain either in the fund or that amount will not be refunded to the company. It will be deposited with the government as a worker welfare fund. Again, a fund has to be established and there would be a trustee, 2% from the employee side, 2% nominated by the management, and 1 must be from the accounting department. Then investment, if there is investment in the fund not yet distributed, that can be invested in ICP, National Investment and government securities. And the company, if delays the payment to the fund, it has to pay a profit to the fund, which is 2.5% more than the bank rate or 75% of the rate of dividend declared by the company or the ordinary share, whichever is higher. We have to make a comparison that the bank rate plus 2.5% on the deposit side and 75% of the dividend rate paid on ordinary shares, and whichever is high, the company has to pay it if he has delayed the payment to the fund. And fund has to be created and the eligibility for the employee is 6 months. So if an employee has served in a company for 6 months, he is eligible to participate in the Workers' Profit Participation Fund. So the unique thing in the WPPF is that the worker has been divided in 3 categories. Number 1 category is the employees who get the minimum salary. Number 2nd category is employees who get salary more than minimum wage but up to 22,000 rupees. And 3rd category is the workers who get amount more than 22,000 rupees, because the fund is distributed on the basis of unit allocated to the employees of these 3 categories. The first category will receive 4 units, and the second category will receive 2 units, and the third and the higher side salary slab will receive only 1 unit out of the allocation. So if we see how it has to be distributed, let's see a table for the distribution of this fund. We have an example like a company have a WPPF of 3 million rupees, and instead of making payment in July, they make the payment in March in next year. So we assume that the closing year is June 18 and the payment was made in March 19. So if you see the screen, the WPPF allocated is 3 million rupees, and then from July to March we have calculated the profit, which is 2% plus the bank deposit rate for each month. So if in July the bank profit rate is 5.5%, added 2.5% over and above, and it becomes 8%. The company will pay 8% for the month of July if the company has not paid the WPPF to the fund. So if we see the calculation, the original amount was 3 million and total profit calculated up to March 19 was 202,000. So total comes to 3.2 million, which has to be distributed to the employees. Now the 3 million is the profit, and this WPPF has to be divided into units, and each unit will be of rupees 10. I already discussed that each category will be given units on the basis of their salary. So the first minimum wage salary will be given 4 units, the second 2 units, and third, the higher side get only 1 unit. So we have 3 million, and if we assume that there are only 80 workers working in the company,
So we have divided in three categories: 8 workers receiving the minimum salary, 17 workers receiving the higher from 17 to 22,000 rupees, and 55 workers receiving the salary above 22,000 rupees. So if we see the table at the bottom of the slide, the first column is the ratios of units to be allocated to each category, 4 to 1. Number of employees, first category 8, then 17 and 55. Then is the product, which is the multiple of number of employee plus unit to be allocated in each category. So 8 into 4 is 32. So if we see the proportion to be distributed among each category, so minimum base salary is 26.45%, second category 28, and third category 44.45%. Then the allocation of units, then the distribution of funds of 3 million. Then the next column is for distribution on the basis of this percentage of profit. Then is the total of fund and profit, and then the allocated total amount to each category of profit, fund, and then the total payment in each category to each worker. So we see the next slide. There is a condition for the maximum amount of WPPF that one employee can get from the employer, and that is maximum 4 times of the minimum wage. Minimum wage now is 17,500, so multiply by 4, it comes to 70,000. So maximum WPP fund that an employee can get is 70,000 per year. So if you see the table, amount allocated to employee, profit allocated to employee, payment for each employee, then the next column is WPPF amount distributed in each category. Accounting to number of units and the observing the upper limit of 70,000, what we can distribute to each member on the part of the original amount is 2.7 million instead of 3 million. The profit has to be allocated to the employee on the basis of the ratio which is set for the original amount as well. So total amount distributed is 2.9 million to the workers, while 233,000 rupees will be given to the government as WWF, Workers Welfare Fund. So there is a unique scenario in this employment benefit that you cannot pay more than 70,000 to one worker. Each worker will be divided into 3 categories, and each category will be allocated a weight according to their salary. Minimum salary will get the higher wage of 4. The second category from 17,500 to 22 will receive the 2 units, and the last category will be at par, receiving weight of 1. So this is the unique calculation criteria which is not available in any other labor laws. There is another point where an employee can get the benefit. I already discussed that if an employee wants to contribute in the fund, he can voluntarily contribute. So if he contribute ₹1, he will get 1.25. So, but there is a maximum limit to it. So if an employee amount receive 40,000 contribute in the fund, he will be allocated 4,000 units because 1 unit consists of ₹10. So we have 300,000 units already. If an employee have computed 40,000 rupees, then the total unit will become 304 because the amount will become 3 million plus 40,000. And the contribution or the units he will receive will be 5,000. 4,000 into 1.25. So the distribution among the other employees would be 299,000 units. That is 304 units minus 5,000 units that will be given to the employee who has made a voluntary contribution, and 299,000 units will be distributed among the remaining employees. Then there are the annexure which has to be deposited with the government. It is annexure 3, which deals with the contribution and the information that has to be provided. The first column is for the accounting years, profit, WPPF, distribution among the categories, and amount paid to each category, and ultimately if there is any amount deposited to the government as WWF. So this is the whole WPPF. If I just make a short
Note of it, 5% distribution applicable if you have 50 employees working in the company, or 20 million assets in the company, or the category for the paid up is 5 million rupees. Earlier it was 2 million. So this is the nutshell for WPPF, Workers Profit Participation Fund. So if we discuss the Worker Welfare Fund, that is a bit simple and there is no cash for different kind of categories of the worker. It was earlier administered by the federal government and now after 18th amendment shifted to the provincial government. And if we discuss the WWF Workers Welfare Fund for the Punjab, the requirement is that every employee whose income exceeds rupees 500,000, he has to make a contribution to a worker welfare fund equal to 2% of his total income. Now, if we see the definition of establishment for which this is applicable, the definition has been enhanced. Earlier, it was applicable to a limited sector when it was governed by the federal government. But in the provincial sector, this definition has been enhanced. Now, every office, firm, factory, society, undertaking, company, shop, premises, enterprise who is working in the province of Punjab, this law is applicable. So practically, this is applicable on each and every organization working in Punjab whose income exceeds rupees 500,000. Now the payment criteria is different. Now there is a comparison between the total income and the taxable income. So if you are filing a return of income, so the 2% will be calculated on the basis of profit before taxation or tax provision for taxation as per accounts, whichever is higher. So we have to see on which income it is applicable. So where the return is applicable, we have to make a comparison about profit before tax or provision for taxation as per accounts or the declared income as per the return of income. So if you are not filing the normal income tax return or filing a income tax statement under section 115, so then the criteria is that your income is the profit before taxation or provision for taxation as per accounts or 4% of the receipt as declared in the statement under section 115 of the income tax ordinance. So here, although it is a provincial chapter, but the criteria for calculation is based on the income tax return filed with the FBR. So if we see the computation, so it is to when the normal tax return is being filed by an employer, it is 2% of the accounting profit before tax as per accounts or 2% of the declared income as per income tax return, whichever is higher. So it means that your profit before tax or your taxable profit as per income tax return, whichever is higher. You have to make a comparison, whichever is higher, you have to calculate the 2% base, making that amount as a base. So if you are filing a return on the final tax regime, then 2% of accounting profit as per accounts or provision of tax or 4% of the receipt as per the statement filed under section 115, whichever is higher. So if we see the computation under these two criteria, when number one, we are filing return under normal tax regime, and number two, when we are filing return under final tax regime. So I have made a 3 calculation. In first category, accounting profit is 4.8 million and calculation is 96,000. Taxable profit 4.7 and we comes to 95,000 for WWF, and provision for taxation is 1.3 million. So if we make a comparison, the accounting profit is on the higher side, so we'll have to pay 96,000 by applying 2% on 4.8 million rupees. If we are filing our return on the basis of final tax regime, so then the comparison is accounting profit before tax 3.2 million, provision for tax 928,000, and receipt as per statement under section 115
6.3 million. So in this criteria, the 4% of the receipt is higher than the other condition. So we'll have to pay 252,000 rupees if we are filing our return under final tax regime. So this is the calculation, how we can calculate WWF under the new law. And if we see the payment dates, the WWF is payable within 30 days of the closing of accounts. And there is also one other condition mentioned that the employer has to make a payment after on the filing of income tax return and has submitted with the government. So normally we follow this criteria that once we follow the income tax return, because if we follow the 30 days criteria, our income tax return may not be prepared. So we have to wait up till the finalization of income tax return. Once the income tax return is finalized, we will make the calculation, we will make the comparison and make payment to the provincial government. So there is a penalty for failure to pay the tax, as we have seen in all the rules, regulations, and taxation, whether federal or provincial. Whenever there is a delay in payment, there is a penalty for late payments. So we have to pay 15% per annum late payment if we do not pay it within time. The main amount payable to the extent of, or the amount payable to the extent of previous 5 tax year, whichever is high. And the burden of liability on certain person, any liability imposed on any establishment under the Act shall be deemed to be the liability of the person who is employed. Means in case of company, the company has to pay the penalty. Now in this scenario, although the comparison is on the basis of income tax, which is a federal chapter, the rules regulation for the manner and mode of payment, calling of records, audit and recovery, these are the same as the Punjab Sales Tax or Services Act 2012. So if we do not pay or if we delay the rules recovery for the records, the audit, the recovery procedure, they are same as mentioned in the Sales Tax Act on Services 2012. So if I brief this law, so it is that we have to pay 2% of the income tax as worker welfare fund if our income exceeds 500,000. So this is all from my side. So if there is any question, we can discuss in the question answer session. Thank you very much. Thank you very much, Sapta Saab, for the wonderful and the detailed presentation. So it's time for the next presentation, and that is by Amir Rashid Saab. He is partner Amir Rashid in Company Chartered Accountants. So presentation is about EOBI and Social Security laws. Over to you, Amir Saab. Amir Saab, kindly unmute your mic. Your mic is Am I audible now? Am I audible now? Yes. Thank you very much. Yes, Thank you very much, audible. Ali. Thank you very much, Ali. Thank you, Rafkat. Regards to our session chairman, Imran Afzal Saab, fellow panelists. I'll be talking about Social Security and EOBI. One of is a provincial topic now, and the other is federal. Let's jump straight away to the Social Security. हम थोड़ा सा अगर इसका एक कॉन्सेप्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन देखें तो इट विल बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट एक्चुअली and our responsibilities. Social security to the workers involve providing or framing such schemes or facilities or amenities which enable the workers to lead a decent standard of life, below which no one should fall, and having financial security to fall back upon in the event of losing job or whatsoever may be the circumstances beyond control.
It represents basically a system of protection of individuals who are in need of protection by the state in contingencies like sickness, injury, or death. It's state responsibility to secure the citizens' legal, citizens' social, economic, and political, and guarantee freedom of expression, belief, faith, and worship, and ensure the people. This is what the preamble of Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973 expresses about the fundamental rights. Right to food, water, medical health, and or inheriting. The right of social security is to ensure every person, to ensure every secured person the mean which will ensure the members of his family to lead a respectable life. ये वो कॉन्सेप्ट है सोशल सिक्योरिटी का जो यूनिवर्सली अडॉप्ट किया जाता है अबाउट द सोशल सिक्योरिटी. लेजिस्लेटिव हिस्ट्री पाकिस्तान में इसकी क्या है? द वेस्ट पाकिस्तान एम्प्लॉइज सोशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1965 का था जो 4 जून 1965 को प्रोमलगेट हुआ था. The word provincial was substituted for West Pakistan by federal adaptation law. In an unamended ordinance, the expression employee was defined in section as any person employed on wages of rupees 1,500 per mensium or month. फिर ये थोड़ा सा आगे चला तो प्रोविंशियल एम्प्लॉइज सोशल सिक्योरिटी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस रीडिफाइन हुआ. ठीक है, term उसने redefine की and it was termed as employee means any person employed whether directly or through others wages on wages or otherwise to do any skilled or unskilled supervisory, clerical, manual or in connection with the affairs of an industry or establishment under the service or apprenticeship, whether written or oral, expressed or implied, but does not. जस्ट अगर आप मुझे इसको एडजस्ट कर लेने दें तो आई विल बी ग्रेटफुल. अच्छा जी, उसके बाद हमने जब इसको डाइल्यूट किया गया प्रोविंसेस की तरफ तो इंट्रोड्यूस हुआ पंजाब एम्प्लॉइज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन. इट वाज एस्टैब्लिश्ड थ्रू प्रोविंशियल एम्प्लॉइज सोशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1965. इट्स एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द पंजाब गवर्नमेंट. इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान. कुछ की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जिनको हम डेफिनेशंस भी कहते हैं सो दैट वी कैन गेट द होल आइडिया ऑफ दिस बेनिफिट. एम्प्लॉय क्या है? एनी पर्सन एम्प्लॉयड वेदर डायरेक्टली और थ्रू एनी अदर पर्सन फॉर वेजेस और अदरवाइज टू डू एनी स्किल्ड, unskilled, supervisory, clerical, manual or other work in connection with the affairs of industry or establishment under a contract or of service or apprenticeship, whether written or oral, expressed or implied, but does not include. ये इसमें शामिल नहीं होंगे. Person in the service of state, including members of armed forces, police, and other servants. Persons employed in any other undertaking under the control of any defense organization or railway administration. Persons in the service of a local council, municipal committee, cantonment board, or any other authority. Any person in the service of his father, mother, wife, son, or daughter, or her husband. Any person employed on wages exceeding the wages determined by the गवर्नमेंट. यहाँ पे एक मिनिमम वेजेस का और एक वेजेस डिफाइन किए जाते हैं गवर्नमेंट से जो कि सीलिंग कहलाती है फॉर सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन. एम्प्लॉयर क्या है? इन द केस ऑफ वर्क्स एग्जीक्यूटेड और अंडरटेकिंग्स carried on by any contractor or licensee by the state. On the contractor or licensee working for the state, in every other case, the owner of the industry, business, undertaking or establishment in which an employee works and include an agent, manager or representative of the owner. ये employee है. Contribution क्या है? The sum of money payable to the institution by the employer in respect of the employee according to the terms of this ordinance. Dependent, the wife or wives or a needy invalid husband, dependent parents and any unmarried children under the age of 21 years dependent on the secured person, provided that
the age limit shall not apply to unmarried dependent daughters. Unmarried dependent daughters के केस में अगर वो unmarried है और 21 ईयर से ऊपर भी है तो वो entitled है इस benefit के लिए. Disablement क्या है? A condition caused by the employment by an employment injury, which, as certified by medical practitioners authorized for this purpose, or intend to reduce permanently a secured person's earning capacity. And disablement shall be where the loss of earning capacity is less than 20%, partial where the loss of earning capacity ranges from 21% to 60%, total where loss of earning capacity exceeds 66%. तो इसको disablement की definition में ले जाए. Domestic servants भी part है इस social security benefit के अंदर. Any person working whole time in connection with the work of any household or any consideration, whether cash or in kind. Employment injury जो पिछली definition में भी term utilize हुई है, a personal injury to the secured person caused by an accident or by such occupational disease may be specified in the regulations arising out of or in the course of employment. Establishment in organization, whether industrial, commercial, agriculture or otherwise. Industry क्या है? Any business, trade, undertaking, manufacture or sealing of them or calling of the employers, and includes any calling, service, employment, handicraft, industrial occupation or vacation of workmen. Wages क्या है? Remuneration for service paid or payable in cash or in kind to a secured person, not less than remuneration based on minimum wages of wages declared under the Minimum Wages Ordinance 1961, without taking into account the deductions of any under the contract of service, apprenticeship, express or employed, and shall be to include any dearness allowance or any other addition in respect of the cost of living and any payment by the employer to a secured person in respect of any period of authorized leave, illegal backout, legal strike, but does not include. ये चीजें wages में शामिल नहीं होंगी. Any payment of overtime, any sum paid to the person employed, defray special expenses entailed by nature of his employment, gratuities का part नहीं होगा, और sum payable as a bonus जो दिया जाता है वो भी wages का part नहीं होगा. Applicability of पैसी को understand करने की जरूरत है. ये एक बड़ा common question है जो raise किया जाता है कि how it becomes applicable. Applicability is, it applies to only to such areas, classes of persons, industries or establishments from such date or dates, and about the provisions of such benefits as government may by notification specify in this behalf. जो पैसी का ऑर्डिनेंस है, एक्ट है, वो सिर्फ यही कहता है. उसके बाद गवर्नमेंट नोटिफाई करती है वेजेस को, मिनिमम वेजेस को अलग से नोटिफाई किया जाता है, और जो सीलिंग सोशल सिक्योरिटी है उसके लिए सेपरेटली नोटिफिकेशंस इशू होते हैं. इस वक्त जो है वो एवरी एस्टैब्लिशमेंट और इंडस्ट्री वेयर इन 5 or more workmen employed on wages not exceeding 22,000, ये इंक्रीज हुआ था 18,000 से, per month is required to be registered with Social Security Department. मंथली बेसिस पे पेमेंट है, जैसे जुलाई 20 की पेमेंट हमें अगस्त 2020 के एंड तक करनी है. लेट पेमेंट सरचार्ज मार्क होता है इसके ऊपर, 0.5% से रेंज करता है, और फिर ये आगे जाके 50% एक स्टैटिक अमाउंट हो जाता है. The non-payment of contribution is a prosecutable offense as well, and in addition to the outstanding arrears of contribution, along with increase can be recovered as arrears of land revenue. ये इसका रिकवरी का मैकेनिज्म है. एक हम हर साल पंजाब में और हर प्रोविंशियल लेवल के ऊपर एक एक्टिविटी हम मेजर करते हैं जिसमें वो मिनिमम वेजेस डिफाइन करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो सोशल सिक्योरिटी की सीलिंग है वो भी रिवाइज होती है. सोशल सिक्योरिटी की सीलिंग यूजुअली हर साल रिवाइज नहीं होती, लेकिन मिनिमम वेजेस बाय लॉ रिक्वायर्ड है. व्हाट लॉ इज दैट? पैसी लॉ authorizes government to annually review the wages, contributions and benefits in line with living costs.
सेक्शन 71 है जो स्टेट करता है कि review and modification of wages limit, contributions and benefits. In January each year, the governing body shall review the wages limit and rates the contribution and benefits provided under this ordinance in light of any change in the wage levels, and living costs shall submit a report thereto. गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट दी जाती है और गवर्नमेंट उस बेसिस के ऊपर मिनिमम वेजेस को भी रिवाइज करती है, और अगर वो कन्विंस्ड हो तो फिर सोशल सिक्योरिटी की सीलिंग्स को भी रिवाइज किया जाता है। ये लेटेस्ट जो सोशल सिक्योरिटी का रिवीजन का जो नोटिफिकेशन है वो ये है 2017 जून का नोटिफिकेशन है जो 18,000 से सीलिंग को 22,000 के ऊपर लेके जाता है। कंट्रीब्यूशन क्या है जी? Every employer shall, in respect of every employee, whether employed by him directly or through any other person, pay to the institution a contribution at the rate of 6%. 6% contribution आपने पे करना ही करना है, ठीक है? और provided that no contribution shall be payable on employees' wages as in excess of 22,000 per month. 22,000 की सीलिंग डिफाइंड है, इससे ऊपर अगर कोई एम्प्लॉय की सैलरी चली जाती है तो उसकी सोशल सिक्योरिटी पे नहीं होनी। अगर वो प्रीवियसली सोशल सिक्योरिटी उसकी पे होती रही है तो ही और शी विल बी कंसिडर्ड अ सिक्योर्ड पर्सन। जो ये कंट्रीब्यूशन पे किया जाता है ये किसी भी सूरत में एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट नहीं होगा, ये एम्प्लॉयर ने पे करना है और उसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देयर आर सर्टेन इंस्टांसेस where Commissioner Passy can increase the rate of contribution if an employer fails to observe rules of safety or hygiene. However, such increase shall not exceed 20% of the contribution otherwise payable. अच्छा, एक सोशल सिक्योरिटी के जो लॉ है उसके अंदर एक सेल्फ असेसमेंट का कॉन्सेप्ट भी दिया गया है। वो सेल्फ असेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? एन एम्प्लॉयर हु ऑप्ट्स फॉर द स्कीम शैल बी लायबल टू पे to the institution a contribution 6% of the wages limit determined per month per secured employee. ये जब एम्प्लॉयर 6% उसने उसी तरह से पे करना है जैसे वो ऊपर कंट्रीब्यूशन का पेमेंट कर रहा है, और फिर एवरी एम्प्लॉय सिक्योर्ड अंडर दिस ऑर्डिनेंस इज आल्सो रिक्वायर्ड टू पे ₹40 पर मंथ। इस केस में ये अज्यूम किया जाता है कि जो सोशल सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट है उसके एम्प्लॉइज एक रेस्ट्रिक्टेड सा विजिट कर सकते हैं एम्प्लॉयर के ऊपर, अंडरटेकिंग के ऊपर, या वो उसके जो डिक्लेरेशन है उसको एक्सेप्ट कर सकेंगे। इस सोशल सिक्योरिटी की पेमेंट के अगेंस्ट जो बेनिफिट्स अवेलेबल हैं वो कौन कौन से बेनिफिट्स अवेलेबल हैं? इन बेनिफिट्स में सबसे पहले सिकनेस का बेनिफिट है। When a secured person is incapable of attending his work on account of sickness, he is entitled to receive cash sickness benefit. His respective contributions must have been paid for at least 90 days during 6 calendar months preceding the date on which capacity of work was certified. Incapacity of work was certified. Sickness benefit shall be allowed throughout the period of sickness due to TB या कैंसर की वजह से ज्यादा एक्सटेंड कर दिया जाता है। In other case, it will be limited to 120 days during the continuous period of 365 days. Maternity का benefit हमारी women को available है। A secured woman shall receive maternity benefit if contributions in respect of her work paid or payable for not less than 180 days during the 12 calendar months immediately preceding the expected date of her confinement. Funeral grant available है। A person receiving or entitled to receive injury or sickness benefit or medical care at the time of his death, the surviving widows or needy widower, or if there is no surviving widows or needy widower, the person who provided the funeral. अगर widow available नहीं है तो अगर किसी थर्ड पर्सन ने फ्यूनरल एग्जीक्यूट किया है उसका shall be subject to the regulations be entitled to such funeral grants as may be provided in the regulation. फिर medical care of the dependents available है। Where a secured person dies other than due to the employment injury, his dependent shall be entitled to medical care from the date of death of the secured person. Injury benefits available है।
डिसेबलमेंट बेनिफिट्स अवेलेबल हैं। मैं थोड़ा सा इसको क्विकली रन अप करना चाह रहा हूँ। डिसेबलमेंट ग्रेच्युटी अवेलेबल है, सर्वाइवर्स बेनिफिट्स अवेलेबल है। ये पैसी के लॉ के अंदर जो बेनिफिट्स अवेलेबल हैं वो ये मेजर बेनिफिट्स अवेलेबल है। तो स्पेंड सम टाइम ऑन एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन। एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन की जो हिस्ट्री है थोड़ी सी वो ये है कि टिल 1972 देयर वाज नो लॉ इन पाकिस्तान which provided coverage of old age benefit. कुछ लॉज प्रोमलगेट हुए थे लेकिन उसमें ओल्ड एज की बेनिफिट पार्ट नहीं था उनका। जैसे वर्कर्स कंपनसेशन फंड थे, फैक्ट्रीज एक्ट थे, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट था, वेस्ट पाकिस्तान सोशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस था, कंपनीज प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑर्डिनेंस, वर्कर्स वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस, वर्कर्स चिल्ड्रन एजुकेशन। एक 1972 में एक एम्प्लॉइज ओल्ड एज पेंशन ऑर्डिनेंस आया था जिसको बाद में रिपील कर दिया गया था। इट वाज अ प्रोविंशियल लॉ। हम अभी अपने इस लॉ की तरफ आते हैं व्हिच इज एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट एक्ट 1976 promulgated in April 1976. Significant amendments has been made throughout this period, कुछ 83 में, 93 में और 2006 में, और continuously improvements इस लॉ के अंदर। Applicability क्या है? It's applicable to every industry or establishment where 5 or more persons are employed directly or indirectly during the year or were so employed at any time during the preceding 12 months period. 1979 तक 10 employees थे, बीच में 20 किए गए, and now there are 5 or more persons किसी भी इंडस्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट में एम्प्लॉय किए जाते हैं तो दे आर बाउंड टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड फॉर एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट with the institution. Once law becomes applicable to an industry or establishment, provisions of this act shall continue to apply to every such entity even after reduction of number of persons below the 5. कोई एंटिटी वॉलंटरली भी अपने आप को रजिस्टर कर सकती है डिपार्टमेंट के साथ, ठीक है। यूनिवर्सल कंट्रीब्यूशन है। EOBI scheme over the years has emerged. Every person working or registered with it irrespective of the wages, salaries, designation. Key concepts इसके क्या क्या हैं? Benefits means old age pension, invalidity pension, survivors pension, old age grant, or such other payments as may be determined by federal government from time to time. Contribution is the sum of money payable to the institution by the employer or by the federal government in respect of insured person under the provisions of। जो हम contribution pay करते हैं वो define होता है। Employee की इस law की अपनी definition है which states any person employed whether directly or indirectly through any other person for wages or otherwise to do any skilled or unskilled supervisory, clerical, manual or other work in accordance with the affairs of an industry or establishment under the contract of service or apprenticeship, whether written, oral, express or employed, and include such persons when laid off even, provided that director of a company इसका part नहीं है। Employer in relation to the industry or establishment means an employer and includes in case of an individual and here successor, administrator or assigned, a person who has ultimate control over the affairs of industry or establishment or where the affairs of an industry or establishment are entrusted to any other person. Employment injury इसमें भी define किया गया है social security के साथ साथ a personal injury to an insured person caused by an accident or by occupational disease arising out of or in the course of employment. Industry ये अपनी definition है यहाँ पे any business, trade, undertaking, manufacture or calling of employer and include any calling, service, employment, handicraft, industrial occupation or vocation for women. Establishment क्या है? Establishment to which the West Pakistan and Establishments Ordinance 1969 applies and includes clubs, hostels, organizations, messes not maintained for profit and gains or establishments including hospitals for treatment of care of sick,
infirm, destitute, and mentally unfit persons. A construction industry as defined under West Pakistan Industrial and Commercial Employment Ordinance 1984, a factory as defined in Factories Act 1933, mines, road transport service, any class of industries or establishments which the federal government may by notification in the official gazette declare to be an establishment. अगर ऊपर वाली डेफिनेशंस में कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं आ रही तो फेडरल गवर्नमेंट स्पेसिफिकली किसी भी एस्टेब्लिशमेंट को इंडस्ट्री डिक्लेयर कर सकती है. इसका कंट्रीब्यूशन किस तरह से पे होता है? Contribution is payable by every registered employer to the institution on monthly basis. It's payable in respect of every insured person. No contribution is payable in respect of person who has attained the age of 60 years, 55 for women, started to receive old age pension from the institution. Presently, contribution is computed on minimum wages notified for EOBI, that is rupees 13,000 for every employee, even if he is receiving any sum above that amount. इसकी कंट्रीब्यूशन जो है कैलकुलेट किस तरह से होती है? मंथली कंट्रीब्यूशन एट द रेट ऑफ 6% ऑफ मिनिमम वेजेस, 5% एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है और 1% जो एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट करता है. तो टोटल इसकी कॉस्ट भी 6% है. इसकी सीलिंग मैक्सिमम जो है वो 13,000 है और इसके अंदर एम्प्लॉई का 1% जो है वो इंक्लूडेड. रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस है, फॉर्म PR1 है, वो हम लेके ईओबीआई के पास जाते हैं. वो हमें एक और ईओबीआई एक्ट का लॉ है, उसके साथ ये 2-3 फॉर्म फिल करके हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं. ऑन रिसीट ऑफ रिक्विजिट पर्टिकुलर्स इन फॉर्म्स, institution shall register the name of industry, the institution shall issue a certificate of registration, and the industry or the establishment shall start making payment of EOBI. Benefits. 4 kinds of benefits are available to insured employees. One is to a monthly old age pension at the following rates: average monthly wages divided by 50 multiplied by number of years of employment. एवरेज मंथली वेजेस लेते हैं जी, उसको डिवाइड करते हैं ये 50 को, ये 60 की जो उनकी रिटायरमेंट एज है उससे थोड़ा सा डिक्लाइन करके रिड्यूस करके उन्होंने एक जो डिवाइडर बनाया हुआ है टू वर्क आउट एक फिगर एंड देन नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के साथ उसको मल्टीप्लाई करके तो एक जो है वो उसकी ओल्ड एज पेंशन बनाई जाती है. कंडीशंस क्या है? ही इज ओवर 60 इयर्स ऑफ एज, 55 फॉर विमेन, ही इज ओवर 55 इयर्स ऑफ एज, 50 years of women if he is employed in the occupation of mining. Mining की थोड़ी सी different है. If an insured person has regularly contributed his portion of contribution to the institution, his rights shall not be affected by default in making payment of employer's share of contribution. एक दफा रजिस्टर होने के बाद एम्प्लॉई अगर अपना शेयर रेगुलरली पे करता रहे तो अगर एम्प्लॉयर ने कहीं पे पेमेंट नहीं भी की हुई तो उसको उसका बेनिफिट मिल जाएगा. Reduced pension. If a person is retired before attaining the age of retirement, but after attaining the age of 50 years, he will be entitled to a reduced old age pension, provided that he provides documentary evidence that employer has a definite establishment retirement age of less than 60. अगर 60 से नीचे अगर किसी एम्प्लॉयर की पॉलिसी है वो रिटायर करता है तो उसको 60 ईयर्स से नीचे भी पेंशन स्टार्ट हो जाएगी. और फर्दर बेनिफिट्स में सर्वाइवर्स पेंशन है. इफ द इंश्योर्ड पर्सन डाइज आफ्टर ही हैज कंप्लीटेड एट लीस्ट 5 years of insurable employment, the surviving spouse, if any, shall be entitled to a life pension equal to minimum pension जो notify होती रहती है from. If the insured person was entitled to old age pension before he died, the surviving spouse shall be entitled to receive full pension. If they were married before the insured person reached the minimum age prescribed for old age pension. If there is no surviving spouse, surviving pension shall be paid to the minor children. And if there are no minor children of deceased insured person, then the survivor's pension will be paid to a surviving person, if any, for a period of 5 years from the death of insured person. Minor male child, he will be entitled to receive equal share of pension until he attains
18 years of age. Female until she attains 18 years of age or gets married, whichever is earlier. 18 years के बाद उसकी मैरिज में थोड़ा सा टाइम मजीद लग जाता है. Until she is married, she will continue to receive pension. Parents, if the surviving spouse dies within 5 years of death of insured person and there are no minor children, survivor's pension shall be paid to surviving parents of the deceased insured person for a period of 5 years. 5 साल तक उसके पेरेंट्स को भी जो है वो पेंशन मिलती है. इनवैलिडिटी के ऊपर भी, if an other employment injury condition where insured person is permanently incapacitated, जहां पे आप permanently incapacitate हो जाते हैं to earn from his usual occupation, फिर उसको 1/3 of the normal rate of earning जो है वो एक मिलती है. ठीक है. An insured person who sustains invalidity shall be entitled to an invalidity pension at the following rates: average monthly wages divided by 50 multiplied by number of years of employment. उसकी invalidity के ऊपर उसकी pension जो है वो UBI की तरफ से उसको मिलेगी. कुछ conditions इसकी भी हैं. हम जंप करते हैं ओल्ड एज ग्रांट की तरफ, जो फोर्थ बेनिफिट है एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट के अंदर. एन इंश्योर्ड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू अ लंप सम ओल्ड एज ग्रांट इक्वल टू his 1 month's average wage of every completed year. हर completed साल के एवरेज का, उस एवरेज सैलरी का, एवरेज वेज का उसको एक ओल्ड एज ग्रांट में मिल सकती है. कंडीशंस क्या है? He retires from insurable employment after attaining the age of 60. Contribution to the institution were paid for less than 15 years but not less than 2 years. ये कुछ कंडीशंस हैं. उस केस में ओल्ड एज की ग्रांट भी इनको अवेलेबल होती है. ग्रीवेंस मैकेनिज्म जो है वो EOBI ने एक डिफाइन किया हुआ है, बहुत अच्छा है. इफ एनी कंप्लेंट इज रिसीव्ड or any question of dispute arises, whether a person is an insured person within the meanings of act, the amount of wages of an insured person for the purposes of this act, the amount of contribution payable, इसके ऊपर भी वो कंप्लेंट आप कर सकते हैं. The person who is employer in respect of the insured person, उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं. फिर आप अपील के लिए जा सकते हैं. क्विकली हम जरा देख लेते हैं कि टैक्सेशन एस्पेक्ट क्या है इनके. बोथ जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो इनकम टैक्स लॉ के तहत अलाउएबल डिडक्शंस हैं व्हाइल कंप्यूटिंग द टैक्सेबल इनकम. सेक्शन 20 है जो स्टेट करता है कि आपके कोई भी बिजनेस एक्सपेंसेस हैं होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, तो वो आप डिडक्ट कर सकते हैं व्हाइल कंप्यूटिंग योर टैक्सेबल इनकम. कुछ टैक्स क्रेडिट्स अवेलेबल हैं जो कि स्पेसिफिकली to encourage businesses to contribute as much as they can towards the social security and EOBI, one of which is tax credit for employment generation by manufacturers. ये specifically उसके लिए है. This was a bit about the social security and EOBI. Thank you very much from my side. Over to you, Ali. Thank you very much, Amir Saab. Thank you very much for giving such an insightful presentation on both the laws. So it's a time for our fourth and the last presentation of the session, and that is by Muhammad Nasir Munir Saab. He is partner Crow Hussain Chaudhary and Company, and presentation is about ISA 250 consideration of laws and regulations in audit of financial statements. So over to Nasir Saab. Assalamu alaikum to everyone. Ali, am I audible? Exactly, you're audible, sir. Okay. First of all, Ji, thank you very much, ICAP, NRC, and organizing committee for inviting me. Ahmed Salman साहब ने, सफदर साहब ने और आमिर रशीद साहब ने बड़ी डिटेल्ड प्रेजेंटेशंस दी हैं, बड़ी इंसाइटफुल थी. और एक्चुअली आप ये देखें कि ऑडिट की तो मिथ ही यही है कि अगर हमने लॉज एंड रेगुलेशंस देखने हैं तो हमें उनकी कितनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग है. तो वो ऑब्जेक्टिव तो अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक इन 3 प्रेजेंटेशन से बड़ा अच्छा अचीव हो गया है, क्योंकि ऑडिट नाम ही यही है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस का. उसके मुताबिक फिर हम लोग प्रोसीजर्स को डेवलप करते हैं. तो आफ्टर दीज वेरी डिटेल्ड इंसाइटफुल प्रेजेंटेशंस आई थिंक मेरा काम बड़ा आसान हो गया है. तो मैं आप लोगों को क्विकली ISA 250 की कुछ जो की रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी तरफ लेके जाऊँगा. लेट मी शेयर माई स्क्रीन. अच्छा जी,
बेसिकली जब मैं इसके लिए कुछ देख रहा था, अपनी प्रेजेंटेशन पे काम कर रहा था, तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मेरे माइंड में अराइज हो रहा था, वो ये कि लॉज एंड रेगुलेशंस और रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कि इनको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं बेसिकली जब हम ऑडिट कर रहे होते हैं। तो आप ये देखेंगे हमारे मुल्क में जो एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, वी ऑल आर अवेयर के IFRS हैं, देन IFRS फॉर मीडियम साइज एंटिटीज हैं। तो प्राइमरीली जो है वो IFRS वो हमारा रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनता है। इसके साथ जो हमारे मुल्क में पाकिस्तान में हम इसमें अपनी स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस में एक और लॉ को ऐड कर लेते हैं, दैट इज द कंपनीज एक्ट 2017। तो by combining these two frameworks or laws, that is the IFRS and Companies Act, तो ये हमारे मेन रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का पार्ट बन जाते हैं। तो इसके अलावा जितने भी लॉज एंड रेगुलेशंस आते हैं उनको फिर आई थिंक आइजा 250 के अंडर हम लेके चल सकते हैं, जहाँ पे हम अदर लॉज एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं। तो उसी एस्पेक्ट से मैंने कहा कि चले जो IFRS हैं या कंपनीज एक्ट है, वहाँ पे तो हम उसको मेन ओपिनियन में उन चीज़ों को कवर कर रहे होते हैं। तो इसके अलावा जो अदर लॉज एंड रेगुलेशंस हैं वो हमारे ऑडिट को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, तो उस पर मैं अपनी प्रेजेंटेशन को कुछ क्विकली आप लोगों से शेयर करूंगा। Scheme of presentation, well, I think to start with, understanding about the responsibilities is very important. We also need to consider the audit objective and the basic audit procedures. Then there comes a very important subject कि अगर कोई identified or suspected non-compliance है तो फिर हमारे audit procedures क्या होने जा रहे हैं, और उसके बाद फिर हम जब प्रोसीजर्स हम लगा चुके होते हैं तो फिर हमने इसको रैप अप कैसे करना है, कंक्लूड कैसे करना है, कम्युनिकेट और रिपोर्ट। Then these are the two very important aspects that we will discuss at the end, that is communication and reporting of identified or suspected non-compliance. अच्छा जी, responsibility, आप ये देखें कि whenever we talk about responsibility about financial statements, about framework, that is a very simple phenomena that the primary responsibility lies with the management. And so is the case in case of laws and regulations. That is, the compliance of laws and regulations has to be ensured by the management under the oversight of those charged with governance. यहाँ पे ये है कि this responsibility of the management is discharged by the organizations in various ways. That depends obviously the complication of compliance, the applicable laws and regulations. कुछ केसेस में हम देखते हैं कि जी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये इंटरनल ऑडिट को ट्रांसफर कर दी जाती है। कुछ केसेस में जहाँ पे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लाइक वी टेक द एग्जांपल ऑफ बैंक्स, वहाँ पे क्या है कि जी कंप्लायंस डिपार्टमेंट्स होते हैं, कंप्लायंस ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं और अच्छा खासा स्टाफ होता है जो लॉज एंड रेगुलेशंस को लेके चल रहा होता है। वेल, ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं जी? ऑडिटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अल्टीमेटली तो वो वही है, हमारी जो एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट वी नीड टू obtain a reasonable assurance that the financial statements are free from material misstatements. इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अराउंड हम देखते हैं कि लॉज एंड रेगुलेशंस को हम कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो वो वही है जी कि अगर कोई मिसस्टेटमेंट इसमें हमने देखनी है तो हमने एट द सेम टाइम ये भी देखना है कि जो एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस हैं कि कहीं उनके नॉन कंप्लायंस से तो कोई मिसस्टेटमेंट नहीं हो सकती फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो इस एंगल को हमने देखना होता है। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी वही है कि हमने ओपिनियन एक्सप्रेस करनी है, उसमें हमने एक रीजनेबल एश्योरेंस देनी है दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, और उसी ऑब्जेक्टिव में एक एंगल है कि वेदर देयर आर एनी misstatements or possibilities of misstatements due to identified or suspected non-compliances of laws and regulations. अच्छा, यहाँ पे ये एक बड़ा important point है कि basically
ऑडिटर को हम इन एनी केस हम रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते कि ऑडिटर ने प्रिवेंट करना है नॉन कंप्लायंस को या ऑडिटर ने तमाम नॉन कंप्लायंसेस को आइडेंटिफाई करना है या डिटेक्ट करना है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आईसा 250 एक्सप्लेन करता है, स्पेशली प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन, क्योंकि अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें वो मैनेजमेंट की है एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस। अच्छा, जब हम लॉज एंड रेगुलेशंस पे आते हैं तो यहाँ पे इनको हम दो कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं या सेग्रीगेट कर सकते हैं। द फर्स्ट कैटेगरी जिस पे हमने सेपरेट प्रेजेंटेशंस भी ली हैं कि वो लॉज एंड रेगुलेशंस विच आर गोइंग टू हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स, जैसे टैक्स लॉज हैं, पेंशन लॉज हैं, या अभी हमने और ग्रेचुटी और प्रोविडेंट फंड वगैरह की डिस्कशंस ली हैं। तो these are the laws which are going to have a direct impact on determination of amounts and disclosures. तो इनको हमने देखना है कि इनकी कंप्लायंस कितनी एडिक्वेट है। अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसे लॉज होते हैं जी जो हम ये कहते हैं कि जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स पे, उनकी डिटर्मिनेशन पे, बट स्टिल उनका बड़ा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है। कुछ ऑपरेटिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, रेगुलेशंस होती हैं हमारी एंटिटीज पे। उसकी अगर हम एग्जांपल्स लें कि अगर लाइसेंसिंग कंडीशन है, कोई हमारी कोई कैपिटल एडिक्वेसी कंडीशंस हैं या कोई इन्वायरमेंटल लॉस का कंप्लायंस है, तो वैसे तो शायद अमाउंट्स की डिटर्मिनेशन में इनकी डायरेक्ट इम्प्लीकेशन नहीं है, बट आप ये देखें कि लाइसेंसिंग लॉज जो हैं उनकी तो सिग्निफिकेंस हम उसको इस तरह से देख सकते हैं कि वो तो इवन हमारी गोइंग कंसर्न को भी इफेक्ट कर सकते हैं कि अगर हम उनके नॉन कंप्लायंस पे जाते हैं और हमारी कोई लाइसेंसिंग कंडीशन या ऑपरेटिंग कंडीशंस में हमारी कोई इम्पेयरमेंट आ रही है, तो वहां पे तो फिर वो ऑडिटर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट हो जाता है कि हम देखें कि क्या कोई इसमें गोइंग कंसर्न के एस्पेक्ट से तो नहीं कोई कंडीशन अराइज हो रही। तो प्राइमरीली हमारे लिए ये रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस हैं आईसा 250 के अंडर। अच्छा जी, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? ऑब्जेक्टिव यही है जो हमने पीछे वाली स्लाइड पे देखा है कि जी लॉज एंड रेगुलेशंस क्या होंगे रेलेवेंट। तो हम ये देखते हैं कि जी हमने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है regarding laws and regulations which are going to have a direct impact on amounts and determination of amounts and disclosures. Then हमने प्रोसीजर्स, स्पेसिफिक प्रोसीजर्स लगाने हैं उन लॉज एंड रेगुलेशंस पे जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जिनका कोई मटेरियल या सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो सकता है, और उसके बाद हमने इसको अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड कैसे करना है कि अगर इन प्रोसीजर्स के बाद अगर कोई नॉन कंप्लायंस आता है तो हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारा ऑडिट ऑब्जेक्टिव है कि हमने उसको अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करना ताकि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर सकें अंडर द आईसा 250। Well, in order to fulfill the audit objective or our responsibility, audit procedures, देखिए हमारे ऑडिट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है, वो हम कहते हैं जी प्लानिंग स्टेज। प्लानिंग स्टेज पे हम प्लान कर रहे होते हैं वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट। आईसा 315 जो है वो हमें बताता है कि जी आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी है एंटिटी के बारे में, उसके वेरियस एस्पेक्ट्स के बारे में। तो इसी स्टेज पे हमने अंडरस्टैंड करना है कि नेचर ऑफ एंटिटी क्या है, उस पे कौन से लॉज एप्लीकेबल हैं, कौन सा लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जिसको इन्होंने लेके चलना है एंटिटी ने, और उसके साथ साथ हमने ये भी अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि जी एंटिटी के पास कौन सा फ्रेमवर्क है कि उसने इस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को कंप्लायंस इंश्योर करने के लिए। थोड़ा सा और आगे चलते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स की तरफ। तो दो स्टार्ट विद सिंपल इंक्वायरीज फ्रॉम मैनेजमेंट एंड दोस चार्ज विद गवर्नेंस। इसी तरह से हम कुछ कोरेस्पोंडेंसेस को हमें देखना पड़ता है कि जो लाइसेंसिंग या रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ हमारी कोरेस्पोंडेंसेस चल रही होती हैं, उनको हम देखते हैं कि वहां पे कोई नॉन कंप्लायंस या कोई सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस तो क्रिएट नहीं हो रहा। तो एट द सेम टाइम ये दो या तीन स्पेसिफिक प्रोसीजर्स लगाने के बाद आईसा 250 हमें ये कहता है कि देखें आपने
ये प्रोसीजर्स तो लगा ली, लेकिन हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के वेरियस कंपोनेंट्स, बैलेंसेस और ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने के लिए या ऑडिट प्रोसीजर्स को लगाने के लिए हम डिफरेंट और भी प्रोसीजर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। तो हमने उन प्रोसीजर्स के दरमियान भी हमने अलर्ट रहना है कि शायद वहाँ पे हमारे सामने कोई चीज़ आ जाए, कोई नॉन कंप्लायंस आ जाए। कि जैसे हम फॉर एग्जांपल हम रेवेन्यू की वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें पता चला कि कोई नई कंडीशन आ गई, कोई फार्मास्यूटिकल है, उसके रेवेन्यू की हम वेरिफिकेशन कर रहे थे, तो हमें कोई नया सर्कुलर हमारे सामने आ गया, कोई नई चीज़ आ गई। तो रूटीन ऑडिट प्रोसीजर्स के दौरान भी हमने स्केप्टिसिज्म रखनी है और हमने अलर्ट रहना है कि और कौन से नॉन कंप्लायंसेस हो सकती हैं या और कौन सी लॉज एंड रेगुलेशंस हो सकती हैं जहाँ पे एंटिटी ने कंप्लाई करना था, अपार्ट फ्रॉम दोज जो हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं ऊपर अंडरस्टैंडिंग के दौरान। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, स्पेशली दोज चार्ज विद गवर्नेंस से, यहाँ पे इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि देखें एंटिटी से ज़्यादा कोई नॉलेजेबल हो नहीं सकता लॉज एंड रेगुलेशन से, क्योंकि एंटिटी को पता होएगा कि देखिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो एंटिटी होती है ना किसी भी रेगुलेटर का, जब भी कोई नया लॉ आता है। तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप अप्रोप्रिएटली वर्डेड और ड्राफ्टेड आप लेते हैं रिप्रेजेंटेशंस, तो वो आपको ऑडिट में काफ़ी बेनिफिशियल होएगी, क्योंकि मैनेजमेंट अगर आपको प्रॉपरली नहीं बताती तो वो कंसीलमेंट के उसमें चला जाता है। तो ये रिप्रेजेंटेशन आई थिंक यहाँ पे इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। वेल मूविंग फॉरवर्ड, कि जब कोई नॉन कंप्लायंस जो है आइडेंटिफाई होता है या सस्पेक्टेड है, वो जो हमने अपने प्रीवियस स्लाइड पे देखे हैं वो हमारे प्रोसीजर्स हैं टू आइडेंटिफाई द लॉज एंड रेगुलेशंस और उनका कंप्लायंस वगैरह। अब ये है कि स्पेसिफिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि कोई नॉन कंप्लायंस जो है वो आइडेंटिफाई हो गया या सस्पेक्टेड है, तो फिर वहाँ पे हमने क्या करना? ऑब्वियसली हमने अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द एक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस एंड द सर्कमस्टांसेस जहाँ पे वो अकर हुआ है, उसको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। थोड़ा और आगे चलते हैं तो हमें फर्दर इंफॉर्मेशन लेनी है कि इस नॉन कंप्लायंस का या सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। उसके बाद हमने मैनेजमेंट को एंगेज करना है, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से हमने डिस्कस करना है। यहाँ पे ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि देखें जब आप दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को एंगेज करने जा रहे हैं तो वी हैव टू कंसीडर कि वेदर देयर इज एनी लोकल लॉ और रेगुलेशन जो हमें प्रोहिबिट कर रही कि हमने उनके साथ डिस्कस नहीं करना और इस चीज़ को हमने डायरेक्टली किसी अथॉरिटी को रिपोर्ट करना है, तो उस केस में तो हमने इस चीज़ को डिस्कस नहीं करना। अदरवाइज आइजा 250 यही कहता है कि जी आप इस नॉन कंप्लायंस को या सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस को उनके साथ डिस्कस करें। इस डिस्कशन के दौरान अगर मैनेजमेंट आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती या नहीं दे रही या आपको लग रहा है और आपकी असेसमेंट ये है कि दैट दिस नॉन कंप्लायंस और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस इज गोइंग टू बी मटेरियल ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो वहां पे फिर हमने लीगल एडवाइस लेनी। अब लीगल एडवाइस को थोड़ा हम इलेबोरेट करते हैं, वो ये है कि अगर आपको लगता है कि ये इतना इनअप्रोप्रिएट नहीं है तो आप एंटिटी के इन हाउस लीगल एडवाइजर से भी डिस्कस कर सकते हैं कि जी ये सिचुएशन है, हमें मैनेजमेंट की तरफ से कोऑपरेशन नहीं मिल रही, तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये डिस्कस करना अप्रोप्रिएट नहीं है तो फिर ऑब्वियसली वी नीड टू रिलाई ऑन द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। हमें अपने अगर हमारी ऑडिट फर्म के साथ कोई अटैच्ड है तो हम उससे डिस्कस करेंगे। हम कॉन्फिडेंशियली हम उसको कॉन्फिडेंशियली को मेंटेन करते हुए हम विद इन एंटिटी भी डिस्कस कर सकते हैं, हम अपनी नेटवर्क एंटिटी में भी डिस्कस कर सकते हैं, ताकि हम उसको इवेल्युएट करें और देखें कि ये जो सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस है ये कहीं कोई एक्चुअल नॉन कंप्लायंस तो नहीं है। इसके बाद कम्युनिकेशन या रिपोर्टिंग की हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। वेल टू स्टार्ट विद अगेन we need to communicate with those charged with governance the matters involving non-compliance with laws and regulations that have come to our attention during the course of the audit. इसी तरह से अगर हम ये देखते हैं कि ये हमारी जजमेंट में अगर नॉन कंप्लायंस जो इंटेंशनल है और मटेरियल है, तो फिर हमने वेट नहीं करना कि इसकी ऑडिट रिपोर्टिंग स्टेज तक वेट करें कि ऑडिट कमेटी मीटिंग होगी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे जाएंगे तो फिर वहां पे होगा। तो फिर आइसा 250 ये कहता है कि अगर इंटेंशनल आपको मैनेजमेंट के पार्ट पे लग रहा है कि इंटेंशनल है और मटेरियल है, तो आपको इमीडिएटली आप उसको नोटिफाई करें टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस को, ताकि एंटिटी कोई किसी प्रोबेबल लॉस से बच सके। सिमिलरली अगर आप
बीइंग ऑडिटर अगर हम ये फील करते हैं कि मैनेजमेंट या दोज चार्ज विद गवर्नेंस उनमें कोई डिफरेंस नहीं है या फुली इन्वॉल्व हैं, तो देन वी नीड टू आइडेंटिफाई द नेक्स्ट हायर लेवल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कि क्या है, क्या कोई हायर लेवल अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है, कोई सुपरवाइजरी बोर्ड है, या इसकी एक छोटी सी एग्जांपल हो सकती है कि अगर हम कोई सब्सिडरी का ऑडिट कर रहे हैं तो क्या होल्डिंग कंपनी का कोई बोर्ड है, क्या हम वहां तक उसको देखें या क्या करें। तो अगर कोई ऐसी हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो अगेन हमारा जो नेक्स्ट जो कोर्स ऑफ एक्शन होएगा या रेस्क्यू होएगा वो लीगल एडवाइस ही होगी। अच्छा जी, इसके बाद we need to discuss the impact of, this is the most important aspect, कि हमने देखना है कि ऑडिटर्स रिपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट आता है नॉन कंप्लायंस का। देखिए नॉन कंप्लायंस हुआ और हम ये देख रहे हैं कि ये एडिक्वेटली इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अब उसकी वजह से कोई अमाउंट इफेक्ट होती है या कोई डिस्क्लोजर इफेक्ट हो रहा है, तो एज पर ISO 705 हमने अगेन देखना है कि वेदर दिस इम्पैक्ट इज मटेरियल और मटेरियल एंड परवेसिव, तो अकॉर्डिंगली हमने क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन की तरफ हमने रेस्क्यू करना है इन आवर ऑडिटर्स रिपोर्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें मैनेजमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रही और हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस करने से रोका जा रहा है, तो अगेन हमने ये देखना है कि अब ये जो हमारी इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है, इसको हम कैसे लेके चलें। तो वो क्वालिफाइड ओपिनियन एंड देन इन केस ऑफ मटेरियल एंड परवेसिव स्कोप लिमिटेशन हमें डिस्क्लेम करना पड़ेगा। एक थर्ड किस्म की कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है, वो ये कि अगर नॉन कंप्लायंस या सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस है बट आप उसको वेरीफाई नहीं कर सक रहे, स्पेशली सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस को, और वो सर्कमस्टांसेस जो हैं वो दोज आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट, उनकी तरफ से लिमिटेशन इम्पोज नहीं है, तो वहां पे फिर आप जैसे हम ये कहते हैं कि मे बी कोई लॉजिकली कोई ऐसा इवेंट हुआ कि जिसकी वजह से वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अवेलेबल नहीं है, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, कोई ऐसी चीज हो गई, तो उसके बाद फिर हमने देखना है कि अगेन उसका इम्पैक्ट ऑडिट रिपोर्ट पे क्या आता है। तो वही है कि इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, हम उसी तरह से उसको एड्रेस करेंगे जैसे हमने प्रोसीडिंग पॉइंट में इसको देखा था। एंड देन ये जो एस्पेक्ट है रेगुलेटरी एंड एनफोर्समेंट अथॉरिटीज, देखें यहाँ पे अब हमने देखना है कि हमने दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को डिस्कस किया, हमने रिपोर्ट को देख लिया, तो रेगुलेटरी एंड एनफोर्समेंट अथॉरिटीज की तरफ हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। तो ये प्योरली ये लोकल जुरिस्डिक्शन हमें गाइड करती है। ISA 250 तो कहता है कि जी अगर कोई आपको लोकल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी या कोई ऐसी कोई अथॉरिटी आपको कह रही है कि आपने दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को नहीं आपने करना या उनको भी करना है और साइमल्टेनियसली हमें भी करना है, तो हमें उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने डिस्चार्ज करना है थ्रू दिस कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे ISA 250 में भी एग्जांपल दी है कि जहाँ, और हमारे लॉ हमारे मुल्क में भी एक नए AML लॉज अब काफ़ी सिग्निफिकेंट हो रहे हैं, उनकी एप्लीकेशन हो गई है, ICAP ने भी AML फ्रेमवर्क दिया है। तो वो एक एग्जांपल है कि जहाँ पे हम इवन दोस्त चार्ट विद गवर्नेंस को या मैनेजमेंट से भी फिर डिस्कस नहीं करते और हम उसको बड़ा कॉन्फिडेंशली हमने जाके उसको जो AML रेगुलेटर है हमने उसको इन्फॉर्म करना। तो ये कुछ की एस्पेक्ट्स थे जो ऑडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू थे। ISA 250 जो हमें कह रहा था कि अदर लॉज एंड रेगुलेशंस को हमने कैसे लेके चलना है। तो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड माय प्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच Ali, over to you again. Thank you very much, Nasir bhai. Thank you very much for the wonderful presentation as always. आप हमारे साथ माशाल्लाह अक्सर हम आपको तकलीफ देते रहते हैं। So it's time for question answer session और before we start that एक मैं यहाँ पे disclaimer जो है वो देना चाहूँगा कि जाहिर है ये we are talking about law और law में answers जो से ज़्यादा opinion होता है। I mean एक चीज़ पे 2 opinion भी हो सकते हैं, 3 opinion भी हो सकते हैं। We have received multiple questions, तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अहमद सलमान साहब से। अहमद सलमान साहब वो पूछ ही रहे हैं कि अगर एम्प्लॉय की टर्मिनेशन मिसकंडक्ट पे होती है तो फिर जो उसका प्रोविडेंट फंड का कोई जो बैलेंस है उसकी क्या सिचुएशन होगी, उसके कंट्रीब्यूशन की और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड। जी ये सिनेरियो है, इसके आपकी आवाज काफी कम आ रही है। अब आ रही है आपको?
जी जी। जो प्रोविडेंट फंड है इसका जो सिनारियो है, इसके अंदर अगर मिसकंडक्ट के ऊपर भी टर्मिनेट किया जाता है तो फिर प्रोविडेंट फंड पूरा मिलेगा, उसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी मिलेगा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी मिलेगा, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट अर्न है वो भी मिलेगा। उसकी रीज़न है एम्प्लॉय का अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो तो उसने ऑलरेडी अपने पैसे पे किए हैं, और एम्प्लॉयर ने जिस वक्त कंट्रीब्यूट किया था उस वक्त वो मिसकंडक्ट नहीं कर रहा था, और जो उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न किया गया है वो दोनों पैसों के ऊपर है। सो टिल द टाइम ऑफ द मिसकंडक्ट जितना भी उसका प्रोविडेंट फंड इकट्ठा हो चुका है, जो कि सालाना उसको बताया भी जाता था कितना एक्यूमुलेट हो चुका है, वो सारी अमाउंट उसको पे की जाएगी। हाँ ओके। अगर कोई एम्प्लॉय अपना प्रोविडेंट फंड उसमें वो नहीं डिडक्ट कराना चाहता, उस केस में उसके पास क्या ऑप्शंस हैं? देखिए जी, इट्स ए लीगल रिक्वायरमेंट, और एम्प्लॉयर के ऊपर है ये लाइबिलिटी कि उसने ये प्रोविडेंट फंड बनाना भी है और पे भी करना है, ठीक है, और प्रोविडेंट फंड के ऊपर कंट्रीब्यूशंस भी लेने हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हर एम्प्लॉय को करना पड़ेगा। अगर नहीं भी चाहता, बहुत से एम्प्लॉय इससे रूटीन थिंग कि बहुत से एम्प्लॉय कहते हैं कि जी हमने जो इसके ऊपर इंटरेस्ट है वो हम नहीं सही समझते, या हम इसको इस्लामिक नहीं समझते तो हम नहीं लेंगे। वो ना लें, लेकिन वो इंटरेस्ट वहाँ पे कैलकुलेट होगा, जाएगा, और फंड में डिस्ट्रीब्यूट भी होगा। वो जो पैसे वहाँ पर चले जाएंगे वो पैसे तमाम एम्प्लॉयज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो ये एम्प्लॉय के पास ऑप्शन नहीं है कि वो ये कहे कि जी मैं कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहता, वो करना पड़ेगा उसको। हाँ, लेकिन अगर वो इंटरेस्ट उस पर नहीं लेना चाह रहा तो फिर उस केस के अंदर उसका इंटरेस्ट बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, वो बाकी लोगों में अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट। अगर एक एम्प्लॉय को दो जगह से किसी को ग्रेचुटी मिल रही है तो उस केस में जो टैक्सेबिलिटी है वो उसमें क्या होगा, हायर ऑफ द अमाउंट, या वो एम्प्लॉय की अपनी ऑप्शन है? एम्प्लॉय की अपनी ऑप्शन है, वो सर्टन हायर अमाउंट को एग्जाम्प्ट करवाएगा और जो लोअर अमाउंट है उसको ऊपर टैक्स कर लेगा। ये इसकी अपने ऑप्शन है कि वो कौन सी अमाउंट करवाना चाह रहा है, तो सर्टनली हर एक हायर ऑफ द अमाउंट को टैक्स करवाएगा। ओके। अच्छा, कई कंपनीज के अंदर, खैर कंपनीज तो डिफरेंट चीजें कर रही होती हैं, हम उस डिटेल में नहीं जाते, आई मीन बहुत सारी चीज जा रही होती हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनीज ने इस तरह किया होता है जी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खुद सेट किया होता है। आई मीन कि आप एलिजिबल होंगे ग्रेचुटी के लिए आफ्टर 3 years, आफ्टर 5 years। तो उस केस के अंदर क्या उसका सिनेरियो, क्या ये वो कर सकते हैं या ये वो नहीं कर सकते? ये अल्ट्रा वायर्स है जी। कंपनीज के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है इसके अंदर, लॉ के अंदर, वो ये है कि 12 मंथ्स, 12 मंथ्स किसी कैलेंडर ईयर के हो सकते हैं, मतलब फाइनेंशियल ईयर के 12 महीने होना ज़रूरी नहीं है, पिछले 6 महीने पिछले फाइनेंशियल ईयर के भी हो सकते हैं, 6 अगले के भी। 12 महीने किसी भी एम्प्लॉय को हो जाएंगे तो उसके ऊपर ग्रेचुटी या प्रोविडेंट फंड इन्होंने कैलकुलेट करना है। उससे कम टाइम कंपनी अपनी विल के ऊपर रख सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम नहीं रख सकेगी। तो अगर वो 3 और 5 साल की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगाते हैं वो गलत है। ओके, मतलब ये इसी तरह से डेफिनेट एक और भी क्वेश्चन आए हैं कि वो कंपनीज अगर कोई हायर करती है और फिर टर्मिनेट कर देती है और फिर रीहायर करती है, इस तरह के क्वेश्चन भी हैं, लेकिन आई मीन आई थिंक ये सारी जो चीजें हैं ये वो टूट गई हैं कि इसके अलावा से कोई खास ताल्लुक नहीं है। एक और बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन उन्होंने कहा जी कि अगर कोई ड्यूरिंग आई मीन एक कंपनी है, उसके पास एम्प्लॉइज थे मोर देन 20 या मोर देन 50 वट एवर द केस, और फिर उसके बाद वो कम हो गए, उस केस में उसकी लायबिलिटी कैसे स्टैंड करती है, और एक जो दफा एम्प्लॉइज रह जाएंगे फिर वो उसमें उनका क्या स्टेटस है? एक दफ़ा जब आप एलिजिबल हो गए इस लॉ के तहत कि जी आपने ग्रेचुटी या प्रोविडेंट फंड में आना है, एक दफ़ा एलिजिबल हो गए तो फिर वो कंटिन्यू होगा, वो चलता रहेगा। ओके ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन टू सफदर, मोहम्मद सफदर साहब। सफदर साहब, वर्कर्स वेलफेयर फंड, वो कहते हैं कि अगर आपकी इनकम एग्जेम्प्ट है किसी की तो क्या उसके ऊपर WWF एप्लीकेबल होगा? देखिए, ये क्वेश्चन तो आजकल काफी पूछा जा रहा है, लेकिन अगर हम ये देखें, अगर हम इस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि तमाम शॉप्स, इस्टेब्लिशमेंट, कंपनी और हर एक पे एप्लीकेबल है जो भी पंजाब में काम कर। अगर हम इनकम की डेफिनेशन में जाते हैं तो इनकम की डेफिनेशन में वो ये कहते हैं कि जी जो कैलकुलेशन की बेस होगी वो होगी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आपका प्रोविजन फॉर टैक्स और टैक्सेबल इनकम। अगर आप एग्जाम्प्ट इनकम की इनकम स्टेटमेंट देखते हैं किसी ऐसे बिजनेस की जिसमें कि टैक्स नहीं है, तो ना तो कहीं वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख रहा होता है, ना कोई प्रोविजन आ रही होती है, ना कोई टैक्सेबल इनकम। इसी तरह अगर फाइनल टैक्स रिजीम में चले जाएं, अगर फाइनल टैक्स रिजीम में कहीं एग्जामिशन वाली इनकम फॉल करती है तो वहाँ भी जो क्राइटेरिया लिखा है वो कहीं फॉल नहीं करता। तो डेफिनेशन
एस्टेब्लिशमेंट की देखें तो ऐसा लगेगा कि सब पे ही एप्लीकेबल है, चाहे वो एग्जाम्प्ट है वो चाहे नहीं है। यहाँ पे आए तो ऐसा लगेगा कि ये सिर्फ उसके ऊपर एप्लीकेबल है जो टैक्सेबल इनकम है। तो दोनों राय पाई जाती हैं अभी तक तो, लेकिन मेरी राय में क्योंकि ये लेबर लॉ है, ये इनकम टैक्स या टैक्स लॉ नहीं है, तो प्रूडेंस यही कहती है कि इसको सब पे अप्लाई होना चाहिए जिसपे भी ये क्राइटेरिया फॉलो करता है कि अगर 5 लाख से ज्यादा इनकम है तो उसके ऊपर ये एप्लीकेबल होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई एग्जाम्प्ट इनकम है तो उसका लेबर वाला भी वो लेबर है, वो भी मिनिमम वेज ले रहा होगा, उस पर सोशल सिक्योरिटी भी अप्लाई हो रही है, उस पर ईओबीआई भी अप्लाई हो रही है। तो मेरे ख्याल में ये होगा, अगर अभी नहीं भी कोई क्लेम करेगा तो अल्टीमेटली प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसको इस तरफ लेकर आएगी कि एग्जाम में इनकम वाले जो लोग हैं वो सब पे करें। थैंक यू वेरी मच। सर अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ वर्कर्स वेलफेयर फंड? वैसे तो ये लिखा है कि विद इन 30 days ऑफ क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, लेकिन क्योंकि जो कैलकुलेशन का क्राइटेरिया है वो टैक्स रिटर्न के साथ लिंक करता है, तो टैक्स रिटर्न के हमारे पास 2 डेट्स हैं। एक ये है कि अगर इंडिविजुअल या एओपी है या फाइनल टैक्स की रिटर्न है तो 30 सितंबर है, अगर आप कंपनीज या नॉर्मल टैक्स में फॉल करते हैं तो 30 दिसंबर है मोस्ट ऑफ द केसेस। तो अगर तो आपकी इनकम या आपकी बिजनेस कैटेगरी सितंबर वाली डेट में फॉल करती है, तो जब आप रिटर्न फाइल करेंगे, जैसे हम पुराने फेडरल के केस में करते थे कि रिटर्न जमा कराई तो पहले तो उसमें से एडजस्ट हो जाता था, तो जैसे ही आप रिटर्न की कैलकुलेशन करते थे तो WWF भी उसमें से पे हो जाता। बाद में FBI ने उसको डिसअलाउ तो करना शुरू किया, लेकिन जब हम रिटर्न जमा कराते थे तो उसके साथ उनकी रिक्वायरमेंट WWF की भी थी। तो अभी भी मेरे ख्याल में जो डेट अप्लाई होगी वो यही है कि जब आप रिटर्न सबमिट कराएं तो उसके साथ अपना WWF भी पे करें, चाहे वो सितंबर में हो जाए चाहे वो दिसंबर में। ओके अच्छा, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वीदर सेपरेट फंड फॉर WPPF इज रिक्वायर्ड? जी, लॉ में तो सेपरेट फंड का ही लिखा हुआ है कि आप सेपरेट फंड मेंटेन करेंगे, और उसका क्राइटेरिया ये है कि 4 बंदे नॉमिनेट होंगे, 2 एम्प्लॉइज नॉमिनेट करेंगे और 2 एम्प्लॉयर नॉमिनेट करेगा, लेकिन उनमें से एक कम से कम जो है वो अकाउंट सेक्शन से होना चाहिए। तो इसलिए उसके लिए अलहदा जो है वो बनेगा जो फंड है, क्योंकि 9 महीने का क्राइटेरिया है, फिर उसकी कैलकुलेशन डिफरेंट है मेरे ख्याल, और डेफिनेटली आपको बनाना पड़ेगा, जो लॉ की रिक्वायरमेंट है वो सेपरेट फंड की है। ओके अच्छा, इसमें अगला क्वेश्चन ये है कि फिजिकल बेनिफिट एम्प्लॉय कैसे ले सकता है वर्कर्स वेलफेयर फंड के हवाले से? लेबर डिपार्टमेंट से आप अपने जो बेनिफिट्स है वो ले सकते हैं। लेबर डिपार्टमेंट में अगर आप रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि कुछ लेबर डिपार्टमेंट के अपने हॉस्पिटल भी हैं, कुछ लेबर वेलफेयर वालों के अपने स्कूल्स भी हैं, तो अगर आप यूओबीआई में सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर्ड हैं तो आपके लिए वो जाके अपने वो कार्ड दिखाएं तो आपको बेनिफिट वो मिलता है। ओके थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आमिर रशीद साहब से है। आमिर साहब, अगर एक एम्प्लॉई हैं और वो रिटायर हो जाते हैं और उसके बाद फिर वो क्लेम नहीं कर पाते ईओबीआई, और वो फिर काफी अरसे बाद जाते हैं उनके पास, तो वो ईओबीआई के एरियर्स वो क्लेम कर सकते हैं? एरियर्स ऑफ ईओबीआई, उसकी पेंडिंग पेमेंट। जी, to my personal opinion, he is entitled to claim those arrears. Definitely claim कर सकते हैं। ओके अच्छा नासिर भाई, एक क्वेश्चन आपके लिए, वैसे बड़ा वो ट्रिकी सा क्वेश्चन है। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल इट्स कंप्लायंस विद अदर लॉज, और अदर लॉज जाहिर है काफी इसका इट्स वास्ट, और इसके अंदर ओपिनियंस भी फर्क हो सकते हैं। आई मीन मैनेजमेंट एक व्यू पे खड़ी है और ऑडिटर एक व्यू पे खड़ा है, तो आई मीन वो उसको उस व्यू को वो डिफेंड करती है जो ऑडिटर के व्यू में ठीक नहीं है। तो उस केस में ऑडिटर को क्या आई मीन व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन क्या करना चाहिए उस केस के अंदर? अली देखें, डेफिनेटली लॉज एंड रेगुलेशंस में ये बात बड़ी पर्टिनेंट है कि देखें, लॉज एंड रेगुलेशंस समटाइम्स ऐसे लॉज एंड रेगुलेशंस होते हैं जहाँ पे ऑडिटर भी एक्सपर्ट नहीं होता, और डेफिनेटली मैनेजमेंट की भी एक्सपर्टीज लिमिटेड होती हैं, तो दोनों अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे ऑडिटर को देखिए
बड़ा इम्पॉर्टेंट है देखना कि ये जो नॉन कंप्लायंस है, वेदर दिस इज एक्चुअल नॉन कंप्लायंस और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस। क्योंकि लॉज एंड रेगुलेशंस में एक चीज़ जो हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आप ये देखें कि ऑडिट, नाइदर ऑडिटर नॉर एंटिटी इज इन अ पोजीशन टू एडजुडिकेट। जो एडजुडिकेट करना है वो कोर्ट ऑफ लॉज ने करना है या उस रेगुलेटर ने करना है जिसकी तरफ से लॉ आया हो। तो हमेशा डिफरेंस ओपिनियन इसी वजह से आता है कि अभी वो एक टाइम गैप चल रहा होता है कि ऑडिटर का ख्याल होता है कि एक नॉन कंप्लायंस हो गया है, एंटिटी कह रही होती है नहीं जी हमारे पास लीगल ओपिनियंस हैं, हमारा लीगल एडवाइजर बड़ा कॉन्फिडेंट है या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। तो देखें स्टैंडर्ड ने यहाँ पे आपको एक्चुअल और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस के बारे में बताया। देखें एक्चुअल नॉन कंप्लायंस का मतलब है कि हमारे पास कॉन्क्रीट एविडेंस है, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है कि वो कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसपे हम कॉन्फिडेंट हैं और हमारे पास एविडेंस है कि नॉन कंप्लायंस हो गया। फिर तो देखिए मैनेजमेंट बेशक उसको डिसएग्री भी करती रहे तो वो तो नॉन कंप्लायंस है। देन वी हैव टू गो टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस, उनको बताना पड़ेगा जी ये नॉन कंप्लायंस हो गया एंड वी आर नॉट गेटिंग कोऑपरेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट। तो अल्टीमेटली फिर हमें वहां पे जाके अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना पड़ता है। और अगर एक्चुअल नॉन कंप्लायंस है, हमारे पास एविडेंस है, तो उस पर हमने उसकी फिर रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन देखनी है इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट एज वेल एज रिपोर्टिंग टू द अथॉरिटीज जहां पे हमारी रिक्वायरमेंट है। हाँ, जहां पे सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस है देखें वहां पे फिर हमारे पास भी एविडेंस नहीं है, एंटिटी भी हमारे से आर्ग्यू कर रही है, फिर इस केस में बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो लीगल एडवाइस है। हमें एक ऑथेंटिक लीगल एडवाइस की तरफ जाना पड़ेगा। Okay. Okay जी, with this question we conclude today's session. अभी हमारा खैर टाइम भी हो गया और मगरिब का वक्त भी है, and I thank you all the presenters, नासिर साहब, अहमद सलमान साहब, आमिर रशीद साहब, मोहम्मद सफ्तर साहब। कमेंट जी जी प्लीज। अच्छा, एक आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन था कि जी सोशल सिक्योरिटी जो है वो एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो व्हाई ओनली आपने पैसी को कवर किया है? तो उसमें मेरा कमेंट सिर्फ इतना है कि वी वुड हैव लव्ड टू कवर ईच एंड एवरी प्रोविंस सोशल सिक्योरिटी, बट सैफ अली सैफ ने तो पहले ही हमें 20 मिनट्स के अंदर क्लब कर दिया था, तो वहां पे तो इन दो लॉज को कवर करना बड़ा टास्क, ठीक है। rather than we would have loved कि हम कोई juxtaposing analysis या comparative analysis सारे social जो security laws हैं उनका कर सकते। It was due to time constraint, पर एक को choose करना था जिसमें से हम through हो सकते। It was because of that. जी, so thank you very much. Thank you अहमद सलमान साहब, आमिर रशीद साहब, मोहम्मद सफ्तर साहब, नासिर मुनीर साहब, चेयरमैन नासिर रफकत हुसैन साहब, और बहुत शुक्रिया जो मैनेजमेंट है, जो हमारा आईटी डिपार्टमेंट है। सो थैंक यू वेरी मच। और सेशन ख़त्म करने से पहले वो एक मियां मोहम्मद बख्श का शेर आज मैं आते हुए सुन रहा था, तो मैंने सोचा था इससे ही शेर पे मैं इसे कंक्लूड करूंगा। वो ये है कि ले ओ यार हवाले रब दे मेले 4 दिन दे, उस दिन ईद मुबारक होसी जिस दिन फिर मिलांगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।